No. 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 Hi, Orion. No. मैंने बोला he's scared now. So he's like, आने दे. He will hit you with stick. Hi Amal, hi Kiddo, hi Ritik. Good luck. Anyway, what's up guys? How's it going? Hello cutie. Amal, what the fuck? अच्छा ये अमल अकाउंट है. राधा के अकाउंट से भी मीन ना. राधा के अकाउंट से बोलेगा हेलो चुड़ैल. यो लिसन, ये क्रॉसओवर क्या हो रहा है अमल? अमल इज सपोज टू बी गुड बॉय. तू राधा पर्सनालिटी अमल में मत ला. तेरी जो स्प्लिट पर्सनालिटी है वैसी रख. व्हाट इज हिज बिहेवियर? गलत बात है ना. हाय टमेटो. Why is the M capital in your name? It's okay राधा, होता है. वही गलत आईडी से भी सॉरी हो गया तेरा. दुबई, yes, I've been there when I was like 20 days old. So I don't really have memories of Dubai. क्या हो रहा है राधा तेरा? I think you're losing your I don't know what to call it. Losing your touch बोलने वाली थी, but then I realized I'm not a little boy, so I can't say that. So yeah, I don't know what to say. Losing your IQ. होता है. कौन डांट खा रहा है? कोई डांट नहीं खा रहा है. मेरा और राधा का बैंटर चलता रहता है. We have decided from the first day that we're gonna hate each other. So we're just keeping up with it. But वो गलत आईडी से आके he was being mean, तो वो नहीं चले ना. Hi Zoro. It's so crazy sometimes, like, you know, everyone has like these particular things I might have said to them the first time I saw them. I love how Radha jab first time आया था stream पे, the first thing I said to him was I hate you. It's crazy. Crazy lore, yes. We will add this to my LR lore book. बहुत सब ऐड करना है. स्पेशली चैट सेक्शन तो भरी हुई होने वाली है. क्रेजी होने वाला है चैट सेक्शन. हाई ट्रैक्स, हाई रिज, गुड आफ्टरनून. थैंक यू. कल मेरे को इतनी वो
किडो के वजह से ना इतने सारे कॉपीराइट आए हुए थे ना, लाइक क्लेम्स, बट वाज सो फनी. तेरी इलेक्ट्रिसिटी फिर कितने बजे आई थी राधा? आज खेलेगा तू रात को? What, whole night? Damn, I hope it wasn't like really hot. बारिश गिर रही थी तो it shouldn't be that hot. But that's crazy. कोई तुम्हारा ट्रांसजेंडर चोरी कर गया था क्या? Have you seen that meme? मेरे को बहुत फनी लगता है वो. Oh, you do? Okay. हाँ, I think रखना पड़ता है ना, like if you live in a place where इतना सब हो रहा हो. पेट गिर गया था, डैम. इतनी गंदी बारिश. You know, trees falling is like one of the scariest thing I feel when you're out in the rain. Because a lot of times when you're in, like when it's raining really bad, sometimes you just stand under a tree और फिर वही तुम्हारे सर पे गिर जाए. Which reminds me, guys, do you have a favorite tree? तेरा river flood हो गया by the way? Hi Hariom. I know it's a very random question, but I wonder if you guys have a favorite tree. Mine's banyan tree. I've always wanted to have a banyan tree. Big, giant banyan tree. पता नहीं क्यों. तुम लोग वुड कटिंग के बिजनेस में थे? फेवरेट ट्री हरिओम. I don't know, banyan trees look so majestic. And gulmohar trees as well. I love them too. But now I feel like gulmohar trees don't bloom as beautiful as they did once upon a time. I don't see that many flowers on it anymore, but otherwise पहले तो gulmohar trees पूरा red हो जाता था. It was so pretty. Hi Shubh. Shubh, do you have a favorite tree? I'm good. तुम बताओ. कैसी चल रही है लाइफ? स्किल ट्री. नाइस. तुम्हारा जीपीयू ठीक हुआ या नहीं अभी तक? Oh, nice, nice. Why? एनिमे आर्क चल रहा है ना तुम्हारा? कितने गेम है मेरे पास? I have like 250 games. No, 295 right now. But then I also like take from other people's accounts. Like PlayStation की जो games होती है वो मेरे account की नहीं होती, वो I use my friend's account. फिर हाँ, सब खत्म.
Hi, Astro. Astro is the only one who greets me correctly. मुझे नहीं पता if anybody's coding here. अरे वाह हरिओम. That's nice. Yes, I am married to Kiryu and Clive. I have, yeah. I have never played it before. I'm just talking right now for like 15 minutes and then I'll start playing. Hi, Abhishek. Hi, Gagan. Shocked to see Gagan here. I'm not playing Final Fantasy. ये कैसे आ गया? I have no idea what you guys are talking about. Okay, let's see. Developed by Crows. मेरा टाइम क्या हो रहा है अभी? 3:58 PM. टाइम क्यों है इसमें? Ever the end is never but the... This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room Let me know if the audio is okay. and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. I have no idea Something how that this would game is, forever by the way, change okay? Stanley. Ekdam Something he would blind. never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. People is But people as he came tree. to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. बहुत sensitivity है बे. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Who farted? No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. People is not fig tree. Please. What?
I like work. I just hate my boss. I hate Monday. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. What if I don't though? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. That was funny. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Who moved my desk? Bhai. How nice. Everybody's unique, guys. Monetize free to play. Number of slides and... Wait, I wanna see this. Bhai, pagal hai ye log. I cannot open all the doors, no? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. No! I will not go there. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. Bye. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream.
Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. What is He this thought to himself, game? I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, Hi, Sonic. he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. What a good narrator. I am okay. Fuck. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Huh? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Oh. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Did I actually get Stanley killed? Again? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first. This time I will not jump to my death. Wow. Yes. This room. What? But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Oh, no, it's to the right, my mistake. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? Wait, what is this game by? Oh dear, would you hold on? What is this game? Now, let's see, we went down right, Nay, left, the fun down, I haven't. Left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. What is this game? नहीं चाहिए तुम्हें membership तो तुम बंद कर सकते हो. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Let's listen to the game this time. When Stanley... Wait. What? What? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Oh. But तुम cancel कर सकते. I mean, you can just say don't allow gifted. Yes. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Again? There are no doors. It's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Oh my gosh. ऐसा क्या? Aha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. No, wait. Never mind. What Not the the story. fuck? Okay, let's head back the other way and retrace our steps. What the hell, dude? Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place at all. Is this the story?
I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! It's called the Stanley Parable. A lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Yay! Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? This is an insane game. The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. I'm not gonna remember it, bhai. Wait, what? We're back at the office? No. Lian, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Oh, no, not again. Lian, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Oh, God. This game is You know insane. what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent हाँ people, वैसी right? टाइप की गेम Why है can't the we make fun. up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Now, yes, this is exciting. Just So me and Stanley exciting. forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Buddy, there's nothing there. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, I'm there gonna must walk be the a wrong way. reverse door that leads here.
And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Can I really not go to this door? Damn. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Oh my Am I God. just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. Okay then. I guess now we just wait, you know. I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you do... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh my gosh. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime. A work of art. What was it about? But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. I can't even pick up the phone, bhai. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited. But मैंने तो plug निकाल दिया. Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another.
Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Bro. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. This is a mad game. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform. Ah, and damn dying. it. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. What kind of drugs was the writer on? I wonder. कुछ भी है ये game, कुछ भी. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. This is too funny, bhai. Oh, it's ruined. I
can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. I'm still here in this pile of rubbish, with you, who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Yeah. Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. This guy's mean. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be If up to only the there was task. a way to Just find follow out. my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. I don't have a That choice means anymore. Choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. My free will. They took away When my free Stanley came will. to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Let's follow his Coming to story. a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Oh, damn. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next What to are it. you talking about? Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. I am the most expensive Was boss. this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. What the fuck? Hello? Shark 1234? Stanley spoke the code. Nightshark
115. He spoke it into the receiver. Right Night there Shark on the wall. 115? Night Shark 115? Night Shark I'm 115? sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise, we can't get on with the story. This is a crucial step. Night Shark 115! They can't hear me. Okay, fine. You're not going to do it. But you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. That's what I did. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you Oh my coward. god, that's what it... When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. Oh my god. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? I'm sorry. Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? I'm sorry. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best. Guys, I just finished the game. That's all right. Sorry, Leroy. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. When Stanley came to a set I'm gonna of 2 follow open everything. doors, he entered the door on his left. I finished the game, though, technically speaking, didn't I? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Following directions ekdam badhiya se. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Hi with it. Guys, my brain hurts. Bro, this is such a great game. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long.
इस बार I'm following. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. I'm not following his Although directions. this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Oh. Is it? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to Hi, walk JK. forward and willingly confront his death. Whee! Whee! I As the lived! machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his Oh shit, demise, no. he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story. Never mind. Trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. R.I.P. "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Number 6. When Stanley came to the lift, he traveled upward to the power source at the top of the facility to end this injustice forever. Bro, this game, dude. This bloody game. What in the world is this game? Happy birthday, Vidit. भाई साहब. Two.
लिटरली पूरा लेवल डिजाइन इसमें बताया है वो लोग ने. Different versions of his office. Narrator emails. Are these actually like... Bro. This game is mad crazy, huh? Mad crazy. Let's go to that room now. Ay wala. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... He dead. A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yeah, see game hai. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's Nah, office. actually back up. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course,
Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. This time I'm gonna follow the entire path. He stepped into the newly opened passageway. It's such a creative game. It's so random. This one, I don't think I've ever played a game this random. एक second आइया. Like the possibilities of things are like almost like, well, not limitless, but there's just so much. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Yes, he did. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Caleb! Thank you. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. How you been? Hope everything's going good. I appreciate you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Good morning, Connor. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won.
He had defeated the machine, unshackled Oh, himself no. from someone else's I hope you feel command. better soon. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Dude, this game is like so crazy. I beat the game apparently, but not really. A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. New content! Oh, new content? What does that mean, new content? Bro, dude. I'm amazed by this game. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. This is Please, one of the most step creative inside and games see I've what ever thrilling new played. adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if, Oh, okay. Let's see the content. Gimme the content, Stanley. All right, let's see. It's the jump circle. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? I didn't even finish my jumps. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good, yes.
I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! I'm actually curious, so... What? Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. Isn't Dear Esther That's how inky game? grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them. And now, it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone.
to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Bro, the meta theme is so insane. The serious room? I can't even go there. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Oh my lord. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Bro. What a game, dude. This is insane. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. No. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, I'm not gonna skip. until the end of time, at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say,
the story, and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. Oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full... Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week, or 2 weeks. I've been sitting here all that time, just sitting here. Good with night, a single Caleb. person to speak Again, with. thank you so And much. you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking. Oh shit. Oh, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with... Did I break the narrator? I think I broke the narrator. Because it is a narration-based game. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and... Pagal ho gaya hai narrator. Am I stuck in this room forever? The end is never the end, 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 is never... I think we broke narrator. और डैम थोड़ा सा RIP होने वाला है मेरे साथ. What? What?
भाई क्या बनाई? Am I even moving at all? Was that even an ending? What was Stanley that? had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. What was that? Hi, this game is insane, huh? This game is genuinely insane. New content, okay. Oh, good. You notice my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Oh my god, dude. Kya creative game hai. Genuinely so creative. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe It's so version difficult has to turned out explain be. this game. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content I for it really should don't know live how up to to that explain legacy. this So game. forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely Is new this actually experience, happening? built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Are they actually making a sequel? Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. Who took I the red figure marker? that Me. if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical. One thing does not belong here. Here we are. Go on, try out some of the new features. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious This entire answer thing is was that they built on want the to be same thing, individually recognized and that one validated was, as by the way. people. So with that in mind, Minimalism, my first कौन सी addition game to the खेली थी game मैंने? is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Liminal. वो वाली जो भी थी ना, super liminal whatever, right? Because like it's very similar. यहाँ पे वो room था एक, पता है वो पंखा वाला, and then I had to stand like this, and that's how I drag it. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim. Sleeping and waking as Jim. That's why the falling in rooms and all love look and similar being to me as heartbroken well. as Jim. Seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust.
Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Jim. Yes! You see? What a thrill! What a rush! That was you! The button described you. Do it again. Do it again. Jim. Ooh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Oh my god. Epilogue. Ooh, free achievement. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this... Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. भाई ये कितना ट्रोल कर रहा है ये गेम. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. भाई क्या है dude? This is God, it really insane. is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Oh my god, merch! Crazy. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit I more can't attractive give as a it. person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2.
Okay, I'll keep the bucket then. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. एग्जिट बंद है क्या? नहीं. All right, have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? I love how I'm just carrying the bucket with me. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. Stanley Parable Deluxe. Perfect. Go ahead. Take a look. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. Why was he not When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Are you serious? I can't with this game. Yet there was not a single person here either. I can't. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really be all alone? This was too much for Stanley to take. Too much for any man to take. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason to keep going. Here on the floor he lay prone, paralyzed by fear for nearly a full hour. But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it mean?
Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so devious and so random that no man could ever hope to guess it. 2845. Statistically, nearly impossible, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Oh my god! You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Oh my god, dude, this game. I can't. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written, but of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Pagal game hai ye. I swear to God. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? This Was game's it even hurting my possible? brain. Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he... Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley... I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is.
More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. Hi. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. I'm gonna You know die. what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. I ghost said it. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door, and this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Not really. Stanley figs. What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. I can't deal with this game, bye. Oh no. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe
He thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? We've Why did already done doors this close one. He's gonna automatically die. behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found You it can't jump, particularly though, seriously, we strange. disabled I'm it. dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now. What happens if I do this? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. We've never done Perhaps that. he'd simply missed a memo. Maybe Stanley would never pick up the bucket. A lonely bucket, lonely Oh my God, and yeah. miserable. Stanley picked up the bucket. My bucket. My bucket. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Trust the completionist instinct. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me see. Yeah, I know. I'm sure it will come to me. Why is this paper glowing? आज सब CS कितने बजे खेलने आ सकते हैं? I wonder.
Wait, what? Did this lift even move? Wow. The lift never moved. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would, and he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's क्या desk. नंबर था मैं तो भूल Nor in गई. his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. भाई क्या है यार ये गेम? Is mad. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. But of course, Stanley and the bucket thought better of it and realized they simply had too much to live for. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. I love my bucket. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. कुछ भी चल रहा है भाई. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! He squeezed the bucket tighter, his one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. बंद कर दिया हमने फिर से.
Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and... No. What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. Stanley can't leave this place, not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. All of his co-workers were... Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Man, that was going to be my last run. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Yes. मैं नहीं जा रही कहीं पे भी. Broom closet. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no, we're getting into name-calling. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Now I'm gonna take control This of is the certainly machine. the most Let's see what logical happens. explanation. This is my last run. This is not a game you can play like straight. Stanley and the bucket 5-6 walked straight hours. ahead through the large door that read Oh my god! Mind Please, Control thank you for the 10 Facility. gifted. Thank you. Thank you so much. क्या Lights kiddo dodge rose होने वाला on है? an enormous room packed with television screens. Thank you so What much. horrible Thank secret you. did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Feels so sad for kiddo. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored Bichara. like guinea pigs.
The bucket Bechara had never kiddo. seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Bucket is crying for kiddo. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter, his one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would... But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped Acha. in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly, silly birds. The control buttons became active again. Huh? Huh. Biju kahin? Khali do. Huh? Tu kau jo? હું લઈ લઈશ એને પછી. Give me 1 second, yeah guys. I need to order some milk. Kiddo, how do you manage to dodge again? Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one Thank you was for surely the another 10 best. gifted freeze. And Stanley was happy. Thank you. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Bichara kiddo. Hi, Amit. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life.
crushed by the weight of this revelation, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Feels so Was bad the for bucket Kiddo. guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. ऐसा तो क्या किया है किडो ने कि उसको मिलता ही नहीं है? Again, Freeze, thank you for the 20 gifted. I appreciate it. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Nope. Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. The door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, I don't need Stanley Kiddo. and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. दीदी आएगी. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end as it was crushed violently to death. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. But there is something we can do. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision for... A soft wind blew outside and perhaps rain started, and if it did, it stopped shortly after. Stanley hoped that he would one day see weather. This game is mad. What do you mean? Like... भाई क्या गेम है ये?
Where I can start it again. कुछ बोलेगा मेरे को? Achievement होगी और क्या? Oh! This game knows players so well. All of his co-workers were gone. Mad insane game, huh? So good. The amount of thought process that's gone into this game. Like, I don't know how this. How do you even come up with something like this? It's insane. But yeah, this is not a game I can play continuously for very long. This is a game I'll pick up after a few months again. वैसी टाइप की गेम है ये. अब क्या करे बट. Say thank you to Freeze. I need to. I'm gonna be right back. Hi Venom. Give me 1 second, okay? My water's over. I'm gonna get some more.
Hi, I'm back. I'm gonna take a small little break because I'm having samosa kebab. आज तो भूल ही गई मेन वस्तु. Thank you. I know. It's going fine. Like, Premier's super tough for me. Competitive, I'm okay. Premier's very tough for me. I've lost so many games. So many games. Oh, this is spicy. Wasn't wrong. No? I'm not. ये तो sergeant rank है. कुछ और ही है वो. I'm silver. Silver 3 in 2 maps and silver 1 on 1 map. That is just your main rank. I think it's CS2 है इसलिए things are different, maybe that's why. Oh my god, Cut was here. फिर मिली तेरी स्किन हॉस्पिटल के नहीं पास. पता ही नहीं था Sad. बहुत दिन क्या गेम है वो स्टैनली पैरेबल अरे बढ़िया गेम थी. खत्म भी हो गई नहीं, it's not a game that you can just finish. It's very difficult to explain the game, honestly. डैम I really don't know how to explain this game. ये जीके ने क्या भेजा है भाई पता नहीं. तो कुछ भी भेजता रहता है. I ignore. डॉग इज सो कंफ्यूज्ड स्टैम्प वेरी स्टैम्प वाओ एस में स्टीम गेम है बाकी लोग किधर हैं मेरा जीपीयू How many boxes do you have? let me see I have one oh ठीक है. I don't know where everyone else is. तो वेट करना पड़ेगा. You okay with that? yeah मैं तो अभी कल तो संडे है. बता खा रहा हूँ
पढ़ना है मेरे को। इमेजिन अभी तक मैसेज आया कि संडे को क्लास ले रहा है। नहीं 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 नहीं। हुआ है कभी वैसा? नॉट रियली। आज पता है सुबह 7 बजे उठ के एक क्लास के लिए गए, एक क्लास बस। इस बार होगा। Why are you preying on my demise? It's fun. लॉयल्टी बैज कैसे मिलती है? वो CS मैंने खरीद रखा था ना पहले। Oh. Hi, ancient king Manzo. What the hell is that name भाई, इतना लंबा। गोवा पहुंच जाएगा, बता दो बता दो। खत्म हो गया मेजर। मैं तो फॉलो भी नहीं कर रहा। I don't know how it works. हाँ खत्म तो हुआ। Vitality 1. Okay. यही जीतते रहते हैं भाई, और किसी को Okay, जीतने that's देंगे good. ही नहीं ये लोग। Yeah, basically, like I Damn. think probably if you look at top 3 players, 2 of them would be from Vitality, top 3 world ranks. Makes sense, I guess. Yeah. तू क्यों नहीं है टॉप येलो में? Hello, cut my. अच्छा। I'm just gonna finish my other food and then we can start. Other food? What want- burger did you order? It's not a burger. I didn't order with samosa kebab. है? I've in bun. So I'm having that. You want? मुझे चाहिए। ले ले। मैं बस But कचौड़ी खा रहा तू बैठ मर कर। जाएगा. It's spicy. अरे What? कितने मर जाऊंगा, कुछ भी बोलती हो। बस spicy इसलिए। अनियन होने हैं। और कौन आया? कौन कौन? अनियन किधर है? अनियन किधर वो है? डॉग्स को खाना खिला रहा है। ओ, हाथ से खिला रहा है? नहीं वो लोग होममेड सब दे दे तो फिर राइस ये चिकन, not चिकन बट एग्स और ये सब मिक्स करके पूरा वो करना होता है। कभी-कभी देख के I बुरा have no लगता है भाई। idea गगन। Sometimes किसको these देखे? dogs and cats have better diet than me, bro. Yeah. Happens. चला गया? कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता। मर गया क्या? नहीं खेलना होगा उसको। हाँ हाँ किडो हाँ। मेरा फोन किधर है? पहली बात चीटर बिहारी जी, प्लीज पिक अप योर फोन। कौन बिहारी जी? वो रिंगटोन। ओह सलीम रुको, मेरा बैग में है। डन 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 डन। वो कौन है? अनियन। What dogs you got, bro? Hello, I got 3 dogs. Damn. फोटो भेजना कभी। It's not
really a burger, but like a samosa kebab. It's a family of 3, 2 dogs and 1 onion. No. Then so it's 4. मैं वही बोल रहा हूँ I साथ में can मिलके भाव confirm भाव this करते guy हैं is pretty much a dog. पड़ोस वाली आंटी स्कूटी चला के जाती है तो चारों मिलके भाव 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 Bro, करके this जाते हैं guy was he wanted cash, okay? So I gave him cash. फिर उसने पैसे transfer किए ना, so I gave him 2000, like he wanted 2000 का cash. So when he's transferring money to me, he gave me 2000. ऐसा नहीं हो रहा उसको कि 2500 या ऐसा कुछ like extra दो. What kind of behavior is this? हाँ भाई गलत बात है ना? इंटरेस्ट भी नहीं दिया है ना? भाव दे दिया करो Wow, Commander, that's amazing. गलत बात है ये. 2000 दिए तो उसके 2 लाख नहीं दे सकते हो तुम इतना हाँ. बदल हाँ और मैंने तो 2 लाख में मैंने सिर्फ 20,000 मांगे थे ज्यादा. लक्ष्मी चिट फंड फिर भी 25 दिन गुड में पैसा जॉब infinite। कमांडर. नई लड़की इन्फिनिट आई काश थी. काश लेडीहुड चिट फंड लेडी हुड ठीक है. मेरे को बहुत सैड फील हुआ था हां ये. तो लेडी रेड बोलेंगे दबंग, तो दबंग, लंबा हो दबंग, जाएगा ना दबंग। ज्यादा फोड़ दबंग दबंग तो रेड हुड बोलना सिर्फ रेड हुड चिट फंड. हां रेड चिट बट वो लेडी ट्रेडमार्क है ना वो नहीं हट सकता अच्छा लेडी नहीं, ट्रेडमार्क है. ओ रेड हुड बुला दो. Oh, we just लेडी started, ट्रेडमार्क है बोल sorry. रहे हैं मीनवाइल द रेड हेयर बहुत दिखा है. वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री है व्हाट. मैं साले सॉफ है क्या मुखवास. नेल करवाने गए थे रेड बॉल फ्री में Oh, there's 2 cats. I'm like, तूने ब्लैंकेट का फोटो क्यों डाला हुआ है? हाँ दो कैट्स है और वो जो एक गद्दे के Oh my ऊपर god, वो that है is also a cat. I just वो saw गद्दे के that. ऊपर बिल्ली है बाबा जी बाबा क्या हो गया इसको ये नॉर्मल है. I think this is what happens to people जिनका कट गया होता है. अरे यार उसका यही उसका पूरा पर्सनालिटी यही है हाँ. गलत क्या है. शॉट आ रहे मुझे डराओ मत मां की आंख मुझे फाड़ दे भाई ओ तेरी डैम खोपड़े में बच गए 3 दे वर रेडी मैन. नाइस शॉर्ट है. बॉम्ब मिल गया गाइस प्लांट कर देते हैं अच्छा वो बोल रहा है शॉर्ट है बट शॉर्ट नहीं है. झूठ बोल रहा है गुड तो बोला है. सेडिमेंटरी ओ डैम. नो लाइज भाई no lies. 1 second. गलती से एक गोली गलत जगह चल जाती ना +1 करने दो भाई +1. किधर है भाई अहान? 77. हिसाब दे रहे हैं उसे हाँ. Every Tally time I sheet get बना के। MVP. उसको मैंने generational में भेज दिया है because he owes me that many keys and cases. भाई टैली भी सॉफ्टवेयर हैंग हो जाएगा. Actually hang himself 2B 1A. मैं मेरी तशरीफ फट गई है मैं जा रहा हूं बी से बी घुस गए वो लोग बी प्लांट कर रहे हैं 3 बी है एक कैटवॉक आ रहा है कैटवॉक डेड 6 अबे यार भाई। सोहेल. भाई 6 यार सोहेल. दिस मैड मैन नाइस यार और AK हारने के बाद वाओ एक क्यूटी है हैं कौन है. भाई नो वे उन्होंने एक AK खरीदी और वो जीत गए नाइस. मस्त छूट दिया था डैम. Short टेक 9 था, by बेटर the way. टू बी फेयर आ रहा है Oof. he's starting to believe he's starting to conquer भाई तेरे पे MP9 तो एक ही थी ना एक है वो लास्ट वाला बंदा था. इमेजिन तुमने रैप अराउंड किया एक दूसरे को. आई थिंक वो था मिड पे भाई शायद मिड पे ही था वो एक वाला लॉन्ग चला रहा था तो टनल होगा अभी. बॉम्ब कहाँ है भाई वो बॉम्ब ले टनल में ही तो था. टनल में ही तो टनल था. में बस था। तुमने मारा था. बेस पे था बेस की तरफ था यहाँ पे राइट पे था वो. ओ, दिख
उसने देख लिया है तेरे नहीं को, नहीं उसने नहीं, देख लिया है देख तेरे लिया को, है, देख उसने लिया है देख लिया है भाई। तेरे को, उसने देख लिया। ये क्या चल रहा था भाई इतने टाइम से यहाँ पे? एकदम घूम लिया पता है पूरा। भाई पूरा इसने घूम लिया 15 भाई, गने बदल ब्रह्मांड ली घूम वो लिया। राउंड में। आई थिंक सब गन से एक एक किल लिया उसने। आई थिंक सो यार। हाँ हाँ, ली डीगल से एक ली, स्काउट से एक ली। टेक 9 से भी एक ली। बट उसको चाहिए थी AK because it reminds me of his घर की याद दिलाती है। डन। आ रहे लॉन्ग आ रहे, शॉर्ट आ रहे हैं। मुझे मार किया। शॉट भी आ रहा है। देखो जरा शॉट। सुसाइड पे मिड पे हैं लोग। एक तो लॉन्ग पे हमारा बंदा मरा है बट माता भाई ब्लू वहीं जा, ब्लू वहीं जा। एक शॉट शॉट कैटवॉक घुस गया है। एक ब्लू और भाई shot आ वापस रहा चले है। जाओ। ब्लू भाई यार वापस दोनों चलेगा। साइड से मेरे को मारा है। वन इज लॉन्ग स्टिल। वापस चला गया। Hi Makita. सॉरी, आई वाज टाइपिंग। Why were you typing? आई हेट दिस एंगल। अच्छी गन है। अरे ये अपना है, मेरे को लगा दोनों शॉट है तो प्लांट किसने किया है? हटा है। एक साइड हो नाइस। मेरे पे किट है, मैं डिफ्यूज करता हूँ, स्टिक करते हैं। अरे साइड अरे प्लांट करके ये नीचे बैठा, मैं भी, मेरे को कॉल क्यों नहीं आया, समझ क्यों नहीं आया मुझे। होता है। It's like ले लो, that. एक डीगल उठा लो। बिल्ली जैसे रोना, कोई जोर होता है। रेड डीगल बिहाइंड यू। I don't want. भाई किसी ने डीगल नहीं दी भाई। मैंने दी तो मिल सही गई। लाइट रेल मिल गई, लाइट रेल। लेट्स गो। ओ फ्लैश आया शॉट पे। I Sierra 1. फकिंग हेल, 2 मिड। अबे यार। कहाँ पे है? हाँ doors. A long. मेरे को डर लग रहा है बहुत। शॉट आ रहे हैं। नाइस शॉट। नहीं कि तुम नहीं डरोगे। फिर कौन? एक राउंड इको करते हैं, नेक्स्ट राउंड बाय। अभी क्या था तो? इको नहीं था भाई, मेरा तो इको ही था। मेरा भी था। और रैन पे पैसे कैसे नहीं है? पता नहीं, डरी, मैंने डरी। एक्स्ट्रा डीगल्स ड्रॉप करी। एक्स्ट्रा मैंने की भाई, 2 डीगल थे। भाई कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है सर? लाइट रेल हाँ किसको ना मिली मेरी थी? प्रॉपर रैंक का just play मेरे for पे आई थी, fun. मेरे पे आई थी। बस तो मतलब मैंने ड्रॉप करी। ए पे फ्लैश फ्लूश आया है लॉन्ग पे। 1 मिड ए पे बहुत फ्लैश 2 आया है। मिड शॉट आएंगे। ए लॉन्ग तो बहुत है, ए पे लॉन्ग तो बहुत। 2 शॉट आएंगे। पक्का कोयल का गन उठाऊंगा मैं। तो आओ ना कोई हेल्प करने। भाई मेरी हेल्प कर दो कोई। ये मेरे ऊपर कौन बैठा है? पर्पल कौन है? अरे भाई मैं शॉर्ट भी देख रही हूँ ना। Since he's हाँ, telling me 2 लोग आ रहा है। नहीं अभी शॉट मत देखो, चिल लॉन्ग देखो, मैं बताऊंगा। एक और लॉन्ग। नाइस। लास्ट का कहां है? नो इन्फो। लॉन्गी है शायद, लॉन्गी है शायद। हो गया लॉन्गी लॉन्गी लुंगी है भाई। लुंगी तो हमारे बीच में बैठा है। ये रहा। आ गया लुंगी वाला। नारियल अंडा। आई थिंक आई एम अकूस्टिक। गया भाई तेरे घर पे पता है। रेड पड़ेगी अब। बहुत बोल लिया तूने। कान फट गए थे मेरे। क्या फट गए? कान। हाय कॉस्मिक। भाई कॉर्टेक्स दिला दो यार कोई। वो क्या है? यार ये डेविल्स की स्किन है। डेविल दे रहा है ना मेरे को, तो थैंक्स। बी एटलीस्ट 1। एक पे क्या कॉल करोगे? बहन चो। एलटी लोग हैं। रेड यू कैन गेट हिम। I need to pick up this guy's gun. तुमने मार दिया ना उसको? हाँ thank you. मार दे, दे।
मैं जाके एक बार देख रही हूँ। तेरी साइड पे है क्या? पता नहीं बट लाइक मॉम ड्रॉप एलटी है। अबे ओ क्या कर रहा है भाई तू? ये मेरे साथ भी किया है इसने। धुएं में मार रहा था मैं। आई थिंक हाँ सीटी। भाई ये जानबूझ के कर रहा है। हाँ जानबूझ के कर रहा है। एक सेकंड। इट्स डेविल को प्रॉब्लम है हमारे से कुछ तो। इट्स डेविल को बैन कर देना है परमानेंटली। टाइम आउट किडो टाइम आउट। अरे एक्चुअली टाइम आउट डाला इसने। नहीं नो कर भाई। रेड एफ क्या है? आई थिंक वो आ जाएगी। और वैसे भी अभी टाइम आउट तो लगेगा नहीं, नेक्स्ट राउंड लगेगा। वो चमाट खाए इसने गंदा वाला। ओए ब्लरी क्या मस्त बेट कर रहा है भाई रेड को। भाई एक आगे से गिर गया भाई। मैं अभी आया हूँ भाई। अभी आया हूँ भाई। अच्छा भाई दे हैव एन ऑफ नाउ। वो तो हम पे भी है। ब्लरी तू साइडेक्स बोल रहा है कॉर्टेक्स बोल रहा है भाई? कॉर्टेक्स। हाँ क्या हुआ गेम चालू कैसे नहीं हुआ अभी तक? कि मर गए सब? सब मर गए। ओह इसलिए मेरी एक गायब थी। ब्लरी बेट कर रहा था तुम्हें। अच्छा मैं खुद गायब था, मैं वेट कर रहा था। तुम्हारे साथ बात तो कर रहा था, कैसी बातें कर रहा था? अच्छा तो ब्लरी के बारे में रूमर्स मत फैला ठीक है? आई डोंट लाइक दैट। अबे एक्चुअली तो स्ट्रीम में जाके देख ले। देख ले देख ले देख ले देख ले। मेरा भाई है वो। भाई और आयन तो आज गया भाई। अरे तू देख साले तो स्मोक पे नेट शॉट आ रहे, शॉट घुस गए, शॉट घुस गए। मैं अकेला। You got this. घंटा I got this. अरे you got this. He got some nuts. Oh my god. You're so good at killing people. Wonder why. ट्रेनिंग अच्छी मिली होगी। भाई पिस्टल यूज कर लेता। नहीं I know. भाई वो पुश क्यों कर रहा है मेरे पे? I didn't expect him to push. टेक 9 है उस पे। टेक 9 है उस पे तेरे पे हॉप है क्यों? अरे सेंस क्यों नहीं करेगा? Oh no. I'm poor मेरे पे again. बाय नहीं है भाई। अस भाई अस। यार इस डेविल्स क्या मस्त खेलता है तू। हाँ भाई Thank you, 16 यार। किल है भाई। डैम। Remember when people didn't appreciate you and they put you in bronze tier in KPL? KPL? KPL, yeah, KPL. KPL. KPL क्या सबसे सस्ता बिका था मैं शायद। हाँ तो ब्रॉन्ज वाले कैटेगरी में था ना। Yeah. KPL is Kalana Premier League. Oh my god, I'm so sorry. Wait, was it done by Kalana esports वाले? नहीं it was done by Matched and all. Oh. So सारे Twitch वाले लोग को they did that proper bidding वाला पूरा phase and everything. Damn. कितने का बिका है? 5 रुपए का? तो मैं अकेला हूँ। हाँ, how much were you sold for? ये बिका 2.5 रुपए। Very cheap though. I don't remember. Like, I know you were in the 50K or lowest something. tier, like you were one of the cheaper Yeah. players. Because that time you were really shit, but then I pulled off a Then you mid did- one tap to immortal guy. So. whoa, crazy. लोग का था क्या? यू। अरे एक लॉग भी गया नाइस लॉग छी भाई Log. बंगाली एक्सेंट लॉग हाँ बेचारा काश अभी होता। छी बोल Log दिया गया। बंगाली एक्सेंट को। वो बंगाली है क्या? Well, he lives in Kolkata. I think he's from Jharkhand. I think, which is worse. भाई क्या कॉम्बो है? ये कौन धक्का मार रहा है मुझे? वो रायन होगा, उसको धक्के मारने की बहुत आदत है। ब्लू और आयन ही है ना? यार। यप ब्लू और और आयन। लोकल में ट्रैवल करते हो क्या बहुत? मुंबई नहीं रहता होगा।
यहाँ पे तीन लोकल लोग। ओ भाई इट्स डेविल्स के साथ तो बहुत बुरा हुआ। कहाँ जब वो BR है क्या सब? लॉन्ग पे सब लोग लो है, लॉन्ग शॉर्ट पे सब लोग लो है, शॉर्ट। अच्छा सब जगह पे थे, लॉन्ग पे भी थे, शॉर्ट पे भी थे। These guys are doing like crazy. वो It was very crazy. crazy. इजीली मार देगा भाई तू सब कुछ डाउन। नाइस। अपना ऊपर कॉर्ड खेल रहे भाई, लुक एट हिज। ओए भाई इधर है। आता है हमारा ऑफर। ओफ नाइस शॉट। प्लस है लो भाई। लॉन्ग ही बैठा है। क्या हेजिटेट करके एंगल क्लियर करता है भाई। He saw him for a good 2 Yeah, but seconds. he was stuck on the bomb, no? You have He to left leave it and then He left it. and then he like stick the thingy again. It was stupid. कुछ I'm going long. डिले होता है आई थिंक अब इसको स्मोक वोक नहीं हाँ थी, बट नहीं वही डिले ठीक है बट Delay नहीं होता वो उसमें, वापस he डिफ्यूज करने लगा। He was too stuck on the diffuse. उसे छोड़ा देखा but then for some reason I think he misclicked or something. नाइस शॉट। शॉट देखो एक। इतना पैसा था तेरे पास तो मेरे को गन दिला सकता था तू। हाई कॉन्फ्लिक्ट्स कोई ना आगे जाके ले लो, उसकी गन गिरी। शॉट पे दो है, दो I'm gonna need help भाई, मेरे पास नहीं है गन। अरे घुस गए ब्लरी तू वहां पे, मेरे को लगा मार तो क्या भाई। एक साइड है। टकला दिखा भाई, ये बंदे ने जो वेव किया है अपना रैंडम ने। ब्लरी स्मोक करके डिफ्यूज कर सकते हैं। ए यार एक जंगल निंजा। मेरे को स्मोक पता हाँ तेरे पे स्मोक थी भाई। Sorry, I'm so sorry. I think this is why I'm losing subscribers. because of the VV. Yeah, I forget. I'm... चीट हो गए। क्या? यार 8.68 हो तू ना असली में चाकू खाएगा। वेट क्या हो गया? कुछ नहीं। What the fuck? एज डेविल को वो पैदा ही नहीं होने दे रहा। हरियाणा मोबो। लड़की तो एक शॉट आ रहा है। दो लॉन्ग है। I really need help soon. Trying to reach. ए यार ये हम प्रीमियर खेल we can do this Yeah. alright, all we need is And power of friendship and हम लोग I don't प्रीमियर have खेलेंगे once राधा joins. Do you mind playing Premier? नो Okay. मेरे को बस गेम खेलना है। स्मोक में केयरफुल। एक कार है, एक कार। एक ही है भाई, फिर से स्किज़ोफ्रेनिया। जल्दी कर। ठीक है नीचे है। अबे यार बहुत दूर बैठा है, मुझे लगा पास And we're full. स्मोक। जब मेरे को स्मोक चाहिए होती है तब मेरे को Premier is like the main rank bit. प्रीमियर इज बिग बेबीज। व्हाट? ए भाई क्या स्पॉन मिला है, सब बी चलो भाई। बेचारा अभी जाओ और एक एक करके डिंग खाओ। You and me and my friend Steve. राधा you there? तू join किया, हाई भी नहीं बोला है। ऐसे ही है आजकल। वापस लाइट गई क्या इसकी? एक डोर्स। बॉम्ब ले लो, बॉम्ब ले लो। आओ क्या शॉट था भाई का। क्या हुआ हाथीराम? I think the rank system they've just changed in this one. I don't know भाई, मेरे को नहीं पता ये सब। Oh my god, it's devils. अबे यार गोली खत्म हो गई यार, एक और गोली होती तो लग जाता। क्या क्रेजी खेलते हैं आप भाई, it's टप्पा करे devils. भाई उस पे भाई। हो शिट। थैंक यू।
मेरे पे नहीं, you can बिजली play क्यों with नहीं आती यार? randoms. बिजली कैन You can play with randoms, but like better है अगर full हो तो. अबे की मत बाय कर डेविल भाई। खत्म हो जाएंगे हम फिर अगले राउंड हार गए तो। हम हारने वाले. हार रहा हूँ मैं, जिंदगी हार रहा हूँ। वो पाओ वन शॉट वन डोर्स अच्छा मेरे साथ कोई आया ही नहीं था यहाँ पे. ओके. है ना? ये मैं आया था, इसने मेरे को मार दिया। Oh my god, oh my god. Finally. बी आ जाओ वो भी है। नो माइंड गेमिंग। It's too late. अबे यार गन चोरी हो गई मेरी. तंदूर उड़ के चली गई। हाँ Oh ना. my god. Come on, you got this. I don't अगर think ये we should play Premier. अगर ये राउंड हम हार जाते खत्म। गन लेके हारते तो। अरे यार देख लिया उसने। फक। कोई नहीं, फर्स्ट गेम है मेरी आज की. होता है ये सब. है ना? बॉम्ब ले ले शुभम. ओ ना माइंड इसने ले लिया. ये मेरे को फ्लैश कर दो। मेरे को लगा पीछे से कोई मार रहा है भाई। भाई शुभम मार रहा हो ना तो वैसे भी हट जाने का वो पागल है थोड़ा. एक ऊपर चढ़ एक साइड निंजा है। निंजा Is the है। ninja still there? Oh, he got me. भाई क्या हेडशॉट उसका मार लगा है. एलिवेटर मॉली करता हूँ शॉट मॉली करता हूँ। डोंट पिक। एलिवेटर डेड। Nice. शॉट मॉली करके स्मोक डाला. वेरी नाइस. अरे स्मोक तो मैंने सीटी पे डाला था। Amazing यार. ये क्या है? ये शॉट पे मैंने स्मोक नहीं डाला ज्यादा ब्रो। CS में कम रहती हूँ. That is actually so true for some of the games. What the hell? Did you finish Metal Gear? No, I gave up on that stupid asshole. भाई मैंने भी उसी पार्ट पे गिव अप किया था। अरे मेरा खत्म ही कितनी नहीं हो गंदी रहा था। फाइट है वो, पता है? Because hitbox is very weird and वो बहुत स्पैम करता रहता है उसका वो हां मेरी अटैक. Very ridiculous fight it was. मेरे को ही क्यों लगता है अरे ये यार सब? कार बैठा है। नाइस. ओ मर गया था कार. साइट हो सकता है। नहीं शॉर्ट और सिटी होंगे. लॉन्ग। ये टीवी भाई रिएक्ट ही नहीं करता कुछ कॉल पे। आई थिंक उसको कॉल मिला ही नहीं. हाँ, but no, Feeling. Stevie doesn't have a lot of functioning brain Awareness. cells. उसका मैंने मोटर देखा फंक्शनिंग था. डेफिसिट है भाई। He died to a guy that was too busy trying to shoot Kiddo somehow. अबे यार शॉट से मार दिया मेरे को. एक शॉट पे है. I'm so bad. Yeah, probably. I mean, I enjoyed the game. It's just that the क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? कौन हंस रहा है? बट डर गया भाई मैं। ईशा की बहन. डाउन। और लास्ट का है ए लॉन्ग. मैं प्लांट कर रहा हूँ, इधर आ जा। अरे भाई कहाँ दो शहर दूर प्लान कर रहे हैं dude। तो मैं इधर हूँ तो यही प्लांट करूंगा ना, घर आके प्लांट करूंगा। नहीं ब्रेक मर गया तो बोल रहा हूँ इधर आ जा, तो भी घूमे रहे उधर। मैं आ रहा था ना, देख नहीं रहा था कहाँ मरा हूँ मैं। नहीं तो तू ए लॉन्ग देख नहीं रहा था. like the game was a lot of fun, but वो पुरानी kind of है ना, combat नहीं पसंद आई मेरे को.
अब तू भाई बोल रहा है। हम जीतने नहीं वाले बाय द वे, we're gonna पड़ गई। वाह क्या listen, please don't doubt my little bro, okay? ज्यादा हो रहा है उसको तेरा। पड़ गई, उसको पड़ गई, उसको पड़ गई। नहीं, तू जीतने उसके वाले तो तुम ही ने बोला था। तुम ना इसको बोल रहे थे। मेरे भाई को बोल रहे थे तुम। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को थोड़ी कुछ बोल सकता हूँ मैं। Can I get a gun, please? Yes, Orion's my brother. मेरा भाई। और हम उड़ा दिया। मॉनिटर साफ करना चाहिए मुझे। कहाँ पे मरा ये बॉब से? मिड पे या हाँ? मिड पे। Wait, I need his AK. उधर है मिड पे। भाई गॉड ब्लडी नो यार नहीं यार। भाई क्या मारा इसने मेरे को? कहाँ पे था वो? ए पे कहाँ पे बट? सीटी। तू भी उसी से मरा। भाई इतना स्ट्रेफ करके मत चलाया कर, रुक के चलाया कर भाई। के उस बंदे के पास एक शॉट है भाई। लॉन्ग आएगा लास्ट शॉट। एक शॉट रहेगा। घूस के लिए प्लान कर दो। शॉट पुश अप। ओह डन। घूस चल जाओ। You think? खेलने दो यार। ठीक है। Where is I think this other everybody guy? looks at goes. बंदा कहाँ है दूसरा? मैं शॉर्ट ही था। नहीं सीटी से आ रहा है वो। नहीं गुस्सो सबसे पहले क्लियर करते हैं। है ना? इसलिए I wasn't going there. मोस्ट कॉमन है। अरे अगर तुम आ जाते रैंप तो और प्रॉब्लम होती ना। रैंप नहीं जाती, मैं ये डब्बे पे ही रहती। क्राउच करके। अनलेस के वो तुम्हें मॉली आउट कर दे, फ्लैश कर दे, बट अगेन 1v2 is they had more chances. clips. Damune girl. Okay. Girl. भाई सोहेल तो उसका रील बना रहा क्या? Guys, bombs TV के पास था और TV। नाइस। टीवी? बॉम्ब लेके आओ कोई। हाँ मैं ला रही हूँ। Bro decides to peek mid. Nice shot one. Shot pushed up. Ninja. Low HP. Crossed, I think smoke crossed. Plant. हाँ मेरे को अगर कोई जाने दे रास्ते में तो great. Shot. Half HP. Shot upper. Nice. Shot upper. ओह एक और भी है, fuck. तो रिपोर्ट हो गया, crazy. कौन रिपोर्ट हो गया? भाई सोहेल। I think Orion is suppressing his inner demon. सोहेल इतना कूट रह गया। हैं? क्या हो गया? अर्जेंट है। Oh my god, wow यार. Being so good, I got reported. Damn. Orion, तेरा काम. Orion का कौन सा इनर डीमन देखा बे तुमने? ओह, Orion? गोली के पीछे क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता. स्पॉट नाना बोल रहा है ये सब. Orion को डीमन जैसा किया था क्या? Oh, never mind. One more. अरे मर जा मेरे भाई। बी आ जा भाई, बी आ जा पीछे आ जा। ये शॉट कैसे लगा? बी आ जा। भाई सब टिकती ऐसी की तैसी भाई। अरे यहाँ पे इसके कोई मिड पे बंदा है। राधा का वार्म अप मैच वो होने वाला है. It's gonna be so funny. मिड पे है, मिड पे। हिट किया क्या उसने? जिले के बैठा है बॉम्ब के पास ही।
You got this. पूरा 1 मिनट है तेरे पास। लास्ट लॉन्ग था। यहीं पे चिपका है भाई वो अभी तक। नहीं भी हो सकता है अब। शॉट भी आ सकता है वो। सीटी भी आ सकता है। भी आ सकता है, देखिए बी पे भी ऐड हो सकता है वो। तेरी चड्डी में भी हो सकता है। वो चड्डी में क्यों है वो? तुम्हें पता तुम क्यों आने देते हो ऐसे ही चड्डी में लोगों को? ओह माय गॉड भाई गन ने हरवा दिया, गन की वजह से नहीं दिखा। नहीं गन स्क्रीन के ऊपर आ गई। क्या पेला है भैया। हाई स्किल मारे क्रेजी। स्ट्रीक पहले भाग गया, उसको पता गाली पड़ने वाली। Most burn damage 16. The most death. Most highest headshot percentage. तेरा राधा Radhan. Assemble. तू म्यूटेड है ओके राधा? Oh bye. हम खेल रहे हैं प्रीमियर, my Yeah. first प्रीमियर मैं गेम। भूल गया कि मैं म्यूटेड हूँ। राधा उसका वार्म अप भी प्रीमियर में करेगा बिकॉज राधा का वार्म अप गेम ही अच्छा होता हम है। प्रीमियर खेल रहे हैं। यस फुल है ना हम लोग। ओ हाँ हम 5 लोग हैं। हाउसफुल। तू कब वो ट्रेंड करने वाली है त्रिशा वैसे? कौन सा? कर वाला। कौन सा? दम्युन गर उनके कर I have no idea what that is. नो। फिर तो हम दोनों को ही कर लेना चाहिए। मैं और सोच करें। यस दम्युन गर उनके Cute case. दो लड़के एक रील भी नहीं बना सकते और तुम उस पर जज कर रहे हो। ठीक है भाई। यही है जेंडर इक्वालिटी। Cute case. What are you saying? Gays? What gays? दो लड़के रील बनाते हैं, हम तो नहीं बोलते लेस्बियन। क्यों नहीं हाँ ना, बोलते? हम तो देख के शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। हम तो डिशवॉशर बोल देते हैं। इसका सेक्सिज्म हमेशा आ जाता है बाहर। I try to suppress it. ओ ये कैसा है भाई? सामने लोग बहुत ज्यादा मिराज खेलते हैं, बहुत ज्यादा डस्टू खेलते हैं हमारी तरह। I think everybody only knows this stuff. बट इसलिए। सामने 14,000 वाला बैडी है भाई। Oh no, Hakur. Okay, what are we banning? Nuke, Nuke and train. Inferno. We have to ban 3, no? Yes. Oh, you have to ban 3? Okay. Oh, we are playing their favorite maps? क्यों भेजा है तूने Yeah. मेरे को किडो? I mean it's okay. कैसा है, कैसा ऑफर है? मेरे को भी देखना है। क्यों भेजा है तूने? मेरे को भी देखना है। मैंने उसको ट्रेड ऑफर भेजा है। मेरे को भी बताओ। रुको। Pink clips. What are we भाई picking? बड़ा खा रहा हूँ, मस्त लग रहा है। Terrace तुम लोग City, बड़ा खा जल्दी बताओ। दिख रहा है? D2 हमने किसी ने पिक नहीं किया। भाई बनाना ट्रेड भेजा ऑफर। उसने तेरे को, that's crazy. एक बनाना क्या करूं पर मैं इसका? रख ले। आ, तेरे को मेरा बनाना है? नहीं। हम लोगों ने लास्ट टाइम कब बड़ा खाया? बड़ा? नॉट बड़ा पाव भाई। टाटा बड़ा। Are we screwed real bad? I guess. कौन है भाई ये बैडीज कौन है? 1450 वाला ईलो है। मैं थोड़ा नम खा रहा हूँ। क्या खा रहे हो? भाई आई थिंक वी आर We're very screwed. क्यों? मेरे खाने से क्या दिक्कत है? गेम चालू हो जाए बताना, मैं स्टॉकिंग पे हूँ।
हो गई चलो। Okay. What do you do with a drunken tailor? What do you do with the tailor? ऐसे हम सबको बी भाग जाना चाहिए। क्यों? सब भी जा रहे हो? No. टैग कर लेते। लॉन्ग आएंगे वो। लॉन्ग एक बंदा लॉन्ग। ओ माय गॉड मेरी खोपड़ी में लगी। बहुत खतरनाक। टिकर भाई हो रहा है। अरे आ भी जा। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं? गाड़ी पीछे। ओह माय गॉड। भाई बहुत बढ़िया खेल रहा है। H2O थोड़ा मार रहा है। थोड़ा? पूरा They're all going to be 20 very है good वो। players, you know. Did we give him ace? No. That ऊपर पैल 84 दिया, 56 दिया। अरे जो लो था उसी को नहीं दिया मैंने। तो कहाँ से आ गए ये लोग हमारे लॉबी में? चलो भाई मिड पुश भाई कर। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? हैं? लास्ट अंडर बोश की लाइक। वैसे हमारे अगेंस्ट से 14,000 ईलो वाला क्यों है? वो नहीं मेरे पता वैसे हो सकता है। वो डोंट क्वेश्चन CS मैच मेकिंग। अच्छा मिड पुश है ना? Is it like the government? इट्स लाइक अरेंज मैरिज भाई। मैं बोलने वाला था पर मैंने बोला Long, नहीं। long, 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 long. Good मैंने morning, ये नहीं बोला Pinky कौन Diva सी TV. government। I think वो भी गए। वो भी गए शायद। गवर्नमेंट तो सारी एक जैसी है उसमें तो कुछ भी गए। नहीं नहीं इधर ही है, long है। Long. मैंने हगा एक कैच और पड़ा ले नहीं। ले ले लिया। एक उठा ले तू। दो AK मिल गए, दो AK मिल गए गाइस। एक उठा सारे। एक मिनट है। तेरा हीरो एक है वो सोइल। अरे यार दो सारे स्मोक यहाँ पे लाइन अप कर बी दे। जाएंगे भी केयरफुल। जाएंगे। एक लॉन्ग। गलील। सोहिल मरने वाला है लॉन्ग वाले बंदे से। इन 3 छुपा हुआ है बच के। एक शॉट। ओए वो you got this। मर गया। यार हाफ HP होगा वो। रेड AK एक के बढ़िया तुम्हारे आगे एंटी। मैं कैसे लेने जाती है कि वो सामने ही था तो? पहले ले आयुष्मान। ओए नहीं गुड इको हमने। नहीं ले सकती थी। इट्स ओके। I was too exposed वहाँ पे। हम बस बता रहे थे कि एक एक And I saw. उन्होंने economy खराब I किया। wanted to actually take the gun of the guy I killed, but नहीं कर पाई। कहाँ जा रहा है? मैं भी जा रहा हूँ। मैं लॉन्ग जा रहा हूँ। मैं शॉट जा रहा हूँ। तू शॉर्ट जा रहा है, मेरे को भी शॉर्ट जाना है, but okay, I'll watch long. Go somewhere else। Yeah, I'll watch short. ऊपर से। They smoked Xbox। यार को घुस लग गए। गई। लॉन्ग Yep, one long है। बैठो। बाकी Long लॉन्ग dead एक। I think one more is gonna come to long. मैं बी होल्ड कर। Yeah, one more long. तू पुश करके एल्टी होल्ड कर सकता है। Guys, दो लोग और long पे है। हाँ तू हाइड रहे। फाइट मत ले। एक पिट था। वो लोग पूरा कैसे स्मोक पुश करके आ रहे हैं ना, क्रेजी। एक मिनट है। हाँ बस वही कंट्रोल पर रखो। कैट कंट्रोल पर रखो, जीत जाएंगे। नाइस। बस ए बार reverse सी चले साइड। एके पड़ी तू है। लॉन्ग देख ले, मैं सुसाइड देख रहा हूँ। लॉन्ग देख ले। स्मोक कर दे बेस्ट। ये क्या है इसकी? बॉम्ब हमारे पास है। हाँ राइट साइड इधर। Got one. चल एल्टी ना आ जाए, मेरे को एल्टी का डर। I don't know where the last guy might be. आई थिंक लास्ट गेस सुसाइड वाला मारा नहीं है। तो यहाँ Is लॉन्ग it गया okay if होगा। I push up आगे? मेरे को एक ले एक लिए हैं। एलटी से भी आ सकता है, देख ले। हमें एल्टी वही ना मेरे को। अब भाई ये सुसाइड Nice. आगे जाके एके ले ले। एक ही बढ़िया लेफ्ट में। लेफ्ट ये वाली भी ले ले। रुको, मेरे को important काम आ गया। ओके तो हम बेटर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओह व्हाट अ मिरेकल। क्यों तू क्या सोचता है हम नहीं कर सकते? हाँ क्यों सोचते हो ऐसा तुम? नो कमेंट्स। कर सकते हैं पर हम करना नहीं चाहते भाई। करना नहीं चाहते। हाँ, दैट्स अ मोर लॉजिकल रीजन। हाँ डाउट कर रहा है भाई हम लोग। भाई ये डाउटर है भाई। Hi Dresh. सबसे बड़ा डाउट मैं है। तो लॉजिकल फैक्ट से बात करता हूँ।
अरे टीम लॉजिकल का हाँ, फैक्ट पापा। कौन है भाई? इधर कोई लॉजिकल फैक्ट नहीं है। मैं अपना 100% लिटरेसी का इस्तेमाल करता हूँ। अबे साले आंडू यार मेरे को बंदूक दे दो नो यार। हिंदी हियर है, कन्नड़ा ओनली। व्हाट रा पोड़ा माइरे। मैंने सुना हर जगह लड़ाई हो रही है, अब महाराष्ट्र में भी लड़ाई हो रही है। वहां तो भाई, वहां पे तो भाई हम लोगों ने स्टार्ट किया है वहां पे भाई। तो स्पॉन्सर्ड लड़ाई हो रही है भाई। The fuck? किधर क्या स्पॉन्सर्ड, क्या बोल रहे हो तुम लोग? महाराष्ट्र में। ब्रांड तुमने फेंक दिया भाई, मैं फेंकने मुझे वाला था। चिकन राइस का नहीं तुम अटक क्यों गए भाई वहां पे? क्योंकि तुमने फेंक दिया तो मैं रुक गया। लॉन्ग कहाँ जा थोड़े रहे हो तुम लौंडे लोग? हैं। शॉर्ट पे कोई है? इज एनीबॉडी वाचिंग नहीं। शॉर्ट? Yeah, मैं देख yeah, रहा हूँ। nobody shot yet. अभी तो बैठ व्हाट? वाओ, क्या मारा इसने। दो लोग हैं उधर वो लेफ्ट साइड पे पिट के। एक इधर ओए, close. है। नाइस और एक लॉन्ग है, और एक लॉन्ग है। हाँ, और है। लॉन्ग है। एक कार। कार्ड है। Nice. नाइस। बोथ यार, लो है, वो भी लो है, वो लो है लॉन्ग पे। हाँ। एक ले लो। हाय हाय सब एक perfect। एक एक गन दे दो गाइस। नहीं, मैं पहला मॉली एक फेंकूंगा और दे दे, रायन मैं तुझे दूसरा M4 दे फेंकूंगा। सुभाष चंद्र बोस। मेरे पे तो एक है ही नहीं, कौन सी है पर किसी को तो मैंने M4 एक नीचे M4 कोई उठा लो। नाइस, मैं पहली मॉली फेंक दूंगा, तुम फेंक देना दूसरी। अरे कौन बंदूक फेंक रहा है? अरे बंद करो बैकना भाई। मिड में देख I रहा am there। हूं। स्मोक करा है। मिड स्मोक करा है, मिड स्मोक Long करा flashes है। है। लॉन्ग फ्लैशेस। शॉट जा रहा है। शॉट देखो एक बंदा। कहां पुश है? यहाँ पे खेलते हैं। हाँ, मैं एक ऊपर जाओ, मैं नीचे से लड़ रहा हूं। लॉन्ग वन अगेन नाइस सेम। वन। अबे इट्स लेवल। शॉट देखते रहो। मैं देख रहा हूँ, तुम लोग भी देखो। लॉन्ग देखो, मैं शॉट देखो। वहां पे दूसरे दो लोग हैं, एक पिट के तरफ चला गया। ही इज गोना वॉक अप डेड। नाइस। लास्ट पता नहीं है। नो बॉम्ब। सिटी देख लेना। नाइस वन। ऐसा लगा बूम क्लैप मेक मी Easy है भाई। 79। अगर हम बैठ के कोऑर्डिनेट करेंगे इजी है। सुनिए बच्चे हैं भाई। 78 मैं शॉट जा रहा हूँ। शॉट मैं मिड देख रहा हूँ। Go long again। एक है सुसाइड। मिड स्मोक कर रहे हैं, आई थिंक। यप, मिड स्मोक कर रहे हैं। शॉट देखते हैं। लॉन्ग रेड। हाँ, I'm watching 80 होल्ड long। कर रखा है मैंने। No flashes, nothing yet। मिड देख रहा है कोई अपना? वो शॉट गया हुआ है। Long। 3 long है। Oh my god, he held me, man. Ding One shot. Short low HP. One long. रियलिटी राइट है। Flashing shot खेल लिया उसने मेरे को। Nice, भाई वो दादा। फाइट इतनी लंबी क्यों चल रही भाई? ए पे है क्या लास्ट? बॉम्ब है। एक पे। हम लो, ठीक है। अबे यार एंटी नाइस। साइड पे है वो। गूस खेलेगा। नहीं गूस नहीं, निंजा। नहीं man, I'm failing. That's why I didn't live. थोड़ा सा एचपी और चाहिए था। भाई वो शॉट वाला यार खेल गया भाई वो मेरे साथ। ये लोग तो एक तो मिड हर राउंड स्मोक कर रहे हैं तो Yeah, this time they also like कुछ नहीं किया and suddenly A long आ गए लोग। फ्लैश नहीं किया ये जो खेल रहा है ना, जैसे तीशा का स्पॉन है, सीधा एलटी पुश कर लिया करो। अगर वैसे मिड स्मोक करता है ना।
मेरा स्पॉन है, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ मैं बाद में बताता हूँ। जैसे तुम एक्सट्रीम राइट में स्पॉन है ना। मैं कहाँ एक्सट्रीम राइट पे थी? भाई मेरे को बचा। नाइस। नहीं। यार मेरे को बचा यार। रुको, अगले में मिड बताता मिड सब मिड ब्लरी वापस आ उसको ऑफ लेने मत देना भाई। एक और है, एक और है। ब्लरी पे बॉम्ब है। रेड एक है। बॉम्ब है? एलटी देख अभी आ गया ना बम। हाँ टॉप में डाला इसका। नाइस वन। भाई फार्मस तो बहुत बढ़िया है। भाई तेरे को क्या बचाया मैंने वहाँ पे भाई। हाँ भाई मैं बच गया, उधर खत्म है। थैंक यू। हाँ जैसे अभी ओरायन का स्पॉन है ना, ये जो स्पॉन है ओरायन वाला, अगर ओरायन नाइफ निकाल के एलटी भागेगा डोर से। Yeah, but I wasn't there. There is- No. नहीं यू वर देयर। जैसे No, I अभी लास्ट wasn't. राउंड यू वर। अभी यू हैव लॉन्ग का स्पॉन। I was where Blurry is. तो इसका स्पॉन सबसे बेस्ट स्पॉन है ओरायन का। ये बिल्कुल फ्रैग कर सकते हैं उनको एलटी को उसके। एस यू सेड एक सुसाइड बैठा है। लॉन्ग मल्टीपल एटलीस्ट 2। नाइस है। अरे यार 2 लॉन्ग। ओरायन को पुश कर दे, मैं जा रहा हूँ बीच हो रहा हूँ। डोर छोड़ दूं क्या मैं? सब लोग उधर है क्या? मैं शॉट देख रहा हूँ। नहीं कैट दो। मैं शॉट देख रहा हूँ। मैं लॉन्ग देख रहा हूँ। आ गया शॉट, आ गया। Fucking hell man, why do I play these angles? स्काउट है उस पे ओरायन, तुझे लेना पड़ेगा। लॉन्ग है आया नहीं, साइड आया नहीं। नाइस शॉट डेड। बॉम्ब एकदम मस्त जगह पर लॉन्ग है। आ गया। लड़ी छिपके खेल। डोंट वेस्ट गन्स। उसको ऐसे भी क्रॉस करना पड़ेगा बॉम्ब लेने के लिए। अरे सीटी देख लो भाई, एक जन सब वहीं पे देख लो। हाँ मिड से आएगा ना। हाँ नाइस। रैंप पे ऑफ है ना। शॉट है। दोनों ग्रेनेड कहाँ गए भाई? सही तो गया। I can't believe he whiffed that one. रैंप पे ऑफ है। I can't believe this guy whiffed. इधर बाप रे, वो कितना तेज है उधर। भाई वो सीधा यू टर्न मार के आया है। वो सिर्फ एक पहला नेट गिरा है, वो भाग गया वहां से। वो 1 सेकंड रुका बस। भाई वो गाड़ी लेके रोटेट किया भाई। LT एक LT जाओ। now. यस। गो ट्राई जस्ट होल्ड एलटी, ओके वो तुम्हें स्विंग करेंगे क्योंकि हम 2 राउंड से जा रहे हैं। मैं और ओरायन। नाइस वन। यार आई विश। मैं लॉन्ग देख रहा हूँ। शॉट घुस रहा है। आई थिंक इज शॉट जा रहा है, क्या टेक? I'm so late. I'm so low. एक और LT है। Oh my god. I think I should get 1 kill and fall back. Shot. अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़। Nice, one more. Nice shot. अबे अरे वेरी गुड शॉट। ओरायन निकाल सकता है, उनको पता नहीं ओरायन यहाँ पे। और थोड़ा जल्दी क्रॉस कर रहा है। नेड है तेरे पे नेड है। साइड नेड कर दे, साइड नेड कर दे। गलत। वो कैसे लगा? आ गई भाई वो गोली। हिल गया। नहीं हिला भाई, वो नहीं हिला थोड़ा हिला। वो क्या I will save. भाई सब टिक की गलती है भाई, मैं तेरे हूं यार। मैं तो एक मार के वापस आ गया। सीएस को होता तो भाई हो जाता। मैं लॉन्ग पे मॉली डाल रहा हूँ, अंधा हो गया। Premier is very tough.
पता नहीं कब आएगा मेरे को। नहीं वो हम राइफल्स खेलते हैं ना बहुत ज्यादा। राइफल खेलते टाइम भी हम शूट करते टाइम थोड़ा सा हिल जाते हैं। काउंटर स्ट्रेफिंग जब तक वो नहीं कर पाएंगे तब तक थोड़ा डिफिकल्टी होगी। नाइस अरे यार सॉरी नाइस सॉरी भाई। अब एक शॉट आ गया है। एक और है, शॉट है कैटवॉक है राइट साइड की राइट साइड। तेरे पीछे हो रहा है ऊपर उफ ऐसा हो रहा है। गन ले लो उनकी। लास्ट बंदा शॉट से मेरे पे गया है। गन मेरे पे एक है वो बॉम्ब हम पे ही है कह रहे गन मेरे पे बॉम्ब मेरे पे नहीं। अरे यार सॉरी बॉम्ब मेरे पे माय बैड। अरे इधर आ जाना मेरे पास आ जा, उधर जाने से अच्छा क्या कर रहा हूं यार। मेरे पे ही आ जाना। हाँ बट गन्स ले लेना। लॉन्ग आ गया लॉन्ग देख लो मिड साइड लॉन्ग इधर 1500 गन। तो सुनाई कैसे नहीं दिया भाई। मैं गन एक्सचेंज कर रहा हूं ऊपर। ब्रोकी ये उसको दे देना इस बंदे को। कौन सा बंदा? ये वाला येलो ब्रोकी वाली गन एक्सचेंज कर दे गन। अरे मेरे को क्यों दे रहा है? शॉट जा रहा हूं ठीक है ले यू एम बेटर। शॉट अबे बैड फ्लैश। शॉट मिड स्मोक मिड 1 मिड। एक लॉन्ग आया किडो। एक एलटी पे he hid now। होल्डिंग एवरीवेयर। नाइस शॉट। एक पे हाफ एचपी ही इज होल्डिंग बी। और एंड बी पे आ सकता है। देख लेना कोई है नहीं। राधा you're at short right? या okay एक मिनट ये जो एलटी पे बंदा था मार देगा उसको। शुभम डेड है ब्रो बताता भी नहीं है कुछ भी। हेलो बी पे एक बंदा हाफ एचपी है। अरे सॉरी मेरा माइक म्यूटेड था। एक यूटी था एक एक्सबॉक्स था। एक्सबॉक्स वाला डेड है नहीं ना? पता नहीं यूटी में जिसने मेरे को मारा वो एक्सबॉक्स वाला नहीं था। बोथ बी आई थिंक बोथ बी आर प्लांटिंग। क्रेजी मॉल। लास्ट हाफ एचपी। बैक साइड। भाई साहब राधा का राधा का अरे पूरा मेरा हाथ स्प्रे पूरा उसके सर के ऊपर से गया। भाई फुल पिकासो बना दिया भाई वहां पे। वैसे कार्टिल बहुत महंगी स्किन है। खा क्या रहे हो भाई? मैं खा रहा हूँ बड़ा खा रहा हूँ। मेरे को एक फ्लैश गिरा ना कोई। भाई तू पूरे टाइम खाता ही रहता है भाई क्रेजी। क्या चाहिए तेरे मैं को? नहीं खाता उतना। फ्लैश ना चुप ले। जब भी हम कुछ थैंक खेल यू। रहे होते एक गेम बाद टाइमिंग नहीं ऐसा खाते होता है क्या मेरे ओरायन को नहीं बंदूक दे है? दो कोई। ओरायन को बंदूक दे दो। नहीं चाहिए चले। वन ना शॉट क्या खेल हंस रहा है रेवन? नहीं शॉट है यूटी लोग हैं। यूटी ग्रीन को एक 2 एलटी है एक एक्सबॉक्स चढ़ा हुआ है। और खेलती है। हां नीचे गया हूं। एक मेरे पे यार बना मैं जाऊं? होल्ड बैक। या वी गोइंग होल्ड दैट। चल दो फिर। Oh my god I whiffed so bad। गॉट इट Nice there was another one there। नाइस ये भर दिया सबको बॉम्ब मिल ये गया। लास्ट एक्सबॉक्स के पास था ना? कहां गया? एलटी था एलटी गया हो। I whiff। यार ये AK मेरे को सीखनी पड़ेगी। Is there anything where I can learn how to use the AK like in aim labs or something? Community maps, not in aim labs, but CS में अबे भाई 1600 की तो सबसे सस्ती वाली है ना। मैं मिड डोर देख मिड डोर की बात कर रहा हूं। Nice राधा। Why did the इसको first drag half take होना so है। long? Wait यार ले इधर बात कर लो तुम लोग। La 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 la. क्या La ये la कहाँ से आ गया भाई? la la. उसने बोला ड्रैग करने को तो मैंने ड्रैग कर दिया। वापस भेज दूँ उसको? नहीं There you go I'm trying it। आपको जाना है क्या?
ना सर क्यों जाऊंगा मैं? You know, it's really funny how Raven got a membership before you did. हाँ भाई पता नहीं रैंडमली कहीं से आ गया। अरे मेरे को तो ऐसे और ईमेल जा आया रहे हैं, चलो आगे चलते हैं। I got a membership for 1 1 minute. month. Membership. जो भी बोलो। Membership. 2 3 भाई कितने लोग हैं? 3 लोग हैं 3 लोग सब लोग हैं, निकल जाओ डेड तीनों डेड। मैं मतलब मर गया अरे सारे मर गए। रडान ने सबको मार दिया। रडान है ही एकदम बढ़िया यार। ऐसा गुड शॉट लास्ट शॉट लाइक 15 टैग। मारो, मैं प्लांट कर रही हूँ। हाफ एचपी होगा शॉट में। मत करो बस इसको नहीं कर रही। आगे यार ये यूएस नाइस। भाई सीटी वाला इतना गंदा मरा ना। ब्रो गॉट द फार क्राई। भी चलते हैं भक्के भाई। डुन खरीद ले ताकि अगर वो मॉली करे ना स्मोक कर देना बस रुकना मत, स्मोक भी हो जाए तो भगते रहना वरना सामने वाला बैठ जाएगा, जो कि हो रहा है ना। ओ मेरे पास मैक 10 आ गई। भाई मेरी मैक 10 गिर गई कहीं, बचाओ ना। चाहिए तेरे को ले। अरे क्या, अरे यहाँ गया भाई। मैं फ्लैश फेंक रहा हूँ, यहाँ पुश कर गया भाई। मैं फ्लैश हो गया किसी ने फ्लैश। चलो बी चलो घुस जा भाई। दो बंदे पेल गया भाई। भाई यार डेविल के फ्लैश के चक्कर में अंधा हो गया। किसका फ्लैश था वो बे? मैं बाहर कर रहा था यार। रिटर्न वहां से नहीं चलती मैक 10। नहीं चलती बहुत ओ डोर जल के आ रहा है भाई बंदा। एक ड्यूटी अबे यार मर गए क्या सब? आराम से सब मर गए? कैसे मर गए सब? आई होप इट्स अ स्किट नाउ। नहीं तब नो हो गया उसका। ओह नो सॉरी, आई डिडंट रियलाइज एवरीवन वाज डेड। किट नहीं है उस पे, किट नहीं है। अरे बट उसने टाइम से पहले लगाया। सो सॉरी। मैं ओरान को बेट करने वाला था, फिर किट वो दिख जाती है पीठ के पीछे दिख जाती है। हेल्प ही कर देता हूं। अरे पता है मेरी गलती थी। नहीं मेरी गलती थी वहां पे। क्लियर नहीं कर रहा तो वही तो बोल रहा हूँ ना, उसमें हेल्प करने में हक दिया। I messed up very bad there. जोगी वहां पे बस इजी काम खत्म हो गई तेरी कंप्लीट करो भाई। अबे हाँ यार इसमें बहुत जल्दी दिक्कत होगा। एक क्रॉस किया। वो मिड पुश आ रहा है। फ्लैश कर दूं तो ये वो जाना है। Oh man, he went back. वॉक करो। Oh my god. Thank you भाई। स्मोक है क्या? हाँ है। कर दे क्रॉस। पे भाई मत डर। ये एक शॉट है, दो शॉट है। एक साइड पे ऑलरेडी है। अरे 3 लोग हैं, 3 लोग। मैं गई हूं। You can spam that box. I didn't know that. Oh my god सब लोग वही। किधर है? सिटी एंड शॉट। सिटी था और एक सिटी है, 2 शॉट है। भाई ये तो दिखाई नहीं, कहां से आया? शॉट वाला यही तो था ना, इधर से आ गया वो। और मेरे को दिखाई नहीं ऊपर से। Because you were flashed, no? स्मोक वगैरह हो रखे थे ना, तो उतना दूर से इतना आगे कैसे आ गया? वॉक करके। क्यों नहीं आ सकते भाई? मैं चल के दिखाता। पैसे हैं क्या एसएमजी लेने के सबके पास? काम करते हैं ना, बहुत मिड पुश ज्यादा करते हैं। डिस्टेंस कवर कर लिया उसने फ्लैश नहीं में। एसएमजी भी रश कर सकते हैं हम। उनका बहुत सारे लोग मैं तो कह रहा हूं मिड पुश करते हैं। करना है ठीक। मिड पुश ओके। बिना मिड से कहां जाने का बाय द वे? उनका भी मिड पुश आ रहा है। ब्लरी सामने फ्लैश है, पीछे को नाइस। एलटी जा रहा है, एलटी है। दो एलटी। एक शॉट। चलो शॉट क्लियर। नाइस, चलो। छोड़ दे क्या खेलता है राधा यार, मेरे को भी भाई सिखा। क्यों गया किडो? शॉटगन थी ना तो। You think I can go and get ना this या तो gun? होल्ड कर लेता। भाई ये यूटी है वो बंदा का। बढ़िया गन। क्या देख रहा है?
You watching short, right? सिटी से आ रहा है वो सिटी से मतलब बी से आ रहा है चलता हुआ ये You guys जल्दी are मैक्सन so good यार. You guys are एक्लाइन so पूरी तो good. भाई मेरे को भी नाइस सिखाओ. वीडियो To be रन this एंड गन good. क्या हो गया? मेरे को रन भी एंड गन सिखाओ. करो बहुत मस्त खेलते हो तुम लोग. फिर से उनका मिड पुश आएगा एक दिन देख लो Especially राधा, like क्या crazy shots मारता है ना वो कभी-कभी. ये तो मेरे Unbelievable है. शॉट्स लग रहे हैं. I never believe राधा अच्छा मार सकता है लोगों को. मैं तो अपने स्कूल में भी लोग Really? एक राइट साइड I thought you were only a Nice. woman abuser. मिड पुश ग्रीन वॉच बैक स्टेप शॉर्ट वन ही सॉ यू बाय द वे सो मैं flash हूँ. लेकिन उसे लगा नहीं कुछ. और भाई बता के 1 CT डबल डोर्स एक लो है. CT क्लोज था तेरे एक dead. ओह नाइस Oh, you saw that? मैंने उसको कूद के देखा वहाँ पे. So I just shot और लग गया. सब बी पुश कर दो मैं मिड जा रहा हूं ओके मैंने स्मोक भी किया इस बार. लेट्स गो. Yeah, lights. $80 MVP. I think I'll stop counting when I reach 100 because I don't. मेरा भाई stutter हुआ. एलटी केयर करना नाइस एक ही है ना LTR वाला. हो गया क्लियर है Okay. टनल देखो कोई. टनल में है टू मिड कोई भी टनल आने वाला है. आएगा एक मिड डोर्स डीडी नाइस Oh my God, we नहीं, won a outside. premium. We already did. एक ही द जीते सेकंड हैं. विन ओ बाय कौन क्या कर रहा है भाई? हेलो. किडो इज इन क्लब Yay! मेरे को I was clapping. What the fuck is wrong with you guys? Sorry. मुझे किडो मैच जीतने खुशी ची में. राधांशी ची किडो ची इसका हमेशा ऐसे ही थॉट्स जाते राधा के Living because up he's to his so weird. reputation. फ्रैक्चर केस चार्म डिटैचमेंट ये फ्रैक्चर केस I think all of you just पहले fracture should like automatically send your cases to me. बात तो सही है. give me more give me नहीं, I'm saving it ताकि मुझे कभी एक लड़की मिले मेरे टीम में and उससे फ्रेंडशिप के लिए I'll send my all my it's cases. okay bhai your son will My son will what? Radha, I don't think a woman's ever gonna talk to you. Just saying. I'm like the last woman that's ever gonna talk you're to not you a on the woman? internet. No, पूरा she sentence just said- complete हुआ ना? पहले सुन लेते हैं पूरी बात. है ना? that's why you won't find a woman in CS Radha. You're no longer a woman. No woman no cry I like bhaji fry भाई भजीज आर द बेस्ट थिंग हियर भाई ऑन गॉड खाता खाता है मैं अभी पता नहीं बजी टाइप के कुछ खा रहा हूँ. तुम लोगों ने खाया कि नहीं पता नहीं. लाइक वाओ YouTube ने म्यूटा का वही एज रिस्ट्रिक्टिंग कर दिया वीडियो का. तो तू अब नहीं देख सकता? वाओ सामने 14,000 था ना. कौन था 14,000? पेल दिया भाई उन्होंने. भाई I think हमें सिर्फ 10 पे ही अच्छी रैंक तक खोलनी चाहिए भैया 14 If I get like a 5,000, 4,000. इमेजिन हमको सीधा 20,000. That's impossible. पर्पल. I think I can Impossible get like नहीं. I think मेरा 4,000 आ सकता है. Maybe. नहीं, 2,000. Ban 2 maps. Anubis ancient.
किडो न्यूक बैन करने जा रहा था। वाओ। उनका टीम ना मिराज में बहुत मतलब हमारे हाथ में लास्ट में न्यूक की सबसे बेकार मैप है। वो सब रैंडम है तो हम आराम से खेल सकते हैं। ऐसा जरूरी मिराज के नहीं है। danger व्हाट इफ team दे है आर सारे। वेरी गुड। सब मिराज न्यूक और और आई थिंक डस्ट डस्ट ही टू खेलते हैं। हाँ मतलब लो ओ वेट, मैंने बैन किया ही नहीं। फक। इट्स ओके, हो गया अपने आप बैन। पार्टिसिपेट नहीं किया। यू आर अ तेरा बिट बहुत ऑफ अ सही ओके। इन्फॉर्म बैन किया। डस्ट बैन बैन किया न्यूक, उन्होंने। बैन न्यूक। या किडो तू मिराज क्यों बैन कर रहा है? किडो हम तुझे बैन कर देंगे भाई। मुझे लगा कुछ नया करें आज। नहीं यार, हाँ, न्यूक न्यूक पे खेल नहीं सकते होता। नहीं न्यूक नहीं, न्यूक इज वेरी उनको भी नहीं आता कंफ्यूजिंग। ना। न्यूक बहुत कंफ्यूज हो जाता है। स्पीक फॉर योरसेल्फ आउटर जाना है, राधा। गोली चलाना है बस। व्हाट डू यू मीन मिराज इज शिट? यू आर शिट गगन। मिराज बहुत sweat गगन है। योर शिट भाई। मिराज और D2 है सिर्फ बैलेंस में, I बाकी सब love थोड़े से मिराज। सिटी साइड ए साइड ऐसे। भाई मिराज इन्फर्नो ऑफ करना वेस्ट बहुत है। मुश्किल है, but- सेम टीम है आई थिंक। नहीं, सिर्फ नहीं, रियूक, नहीं, सिर्फ रियूक सिर्फ है। रियूक रियूक है। से रियूक से। छपरी और पता नहीं कैसे पिटने आ गया भाई। इंडोनेशिया वाला तो पहले आया है, पता नहीं। और ए है। इसकी डीपी देख के ही लग रहा है। पानी पिया गाइस मैंने। लिविंग अप टू हिज नेम। तो हमें क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये कैसा कॉल है? तुम भी पानी पी लो गाइस। मैं तो चाय पी रहा हूँ। ये इस मोमेंट में चाय कौन पीता है? 8 बजने वाले भाई। डिनर ही कर लो। भाई नींद खोली होती है ना CS के लिए। आई थिंक आई प्ले लाइक 2 more games। मैं साथ में चाय पीता No. हूँ। Why only 2 more? इसके बाद Are मैं you like a जाऊँगा। loser or something? यस। Hey यार। A loser ऐसे in a नहीं loser होता है। college। अरे स्टैनलीज पर्पल पैलेस खत्म हो गई क्या? पूरी नहीं, like I क्या? mean this is a game that will not get over. Like it's like there's so many possibilities of things to do. ये तुमने खरीदी थी? मैंने नहीं खरीदी थी। और भाई इनकी टीम ही नहीं आई। ए पे फ्लैशेस। Like proper पैलेस पे push. नेट खाया उसने। नाइस। यूके लाया। और क्या? टेट्रिस। अरे साइड घुस गया। What the side का है? एक टेट्रिस। शांत रहा है। मैं तुम में से कोई एक ना कॉम्स नहीं दे रहा है मरने के बाद भी। भाई उन्होंने नेट so गंदा sorry. नेट खाया भाई। I'm so sorry. ओरायन तू म्यूटेड है? आई थिंक सो। उसी वी तेरा आवाज नहीं आ रहा, तेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया है। ग्रीन बबल हो रहा है बट वी कांट हियर यू। कोई तो अपने माइक को छू रहा है। ये ओरायन में भी। कोई तो अपने माइक को छू रहा है। हाँ अनम्यूट कर रहा। छूना पड़ता है उसको। I love how I got 3 people with 49 total damage. सबके नाखून छील लिए भाई। मैं कनेक्टर देख रही हूँ। विंडो स्मोक करें, मिड देखो एक। ब्लू ऐप से। एक मिड और टॉप मिड नेट से एक जरा। नाइस। प्रॉपर भी हो रहा है? नहीं नॉट नाउ। नो माइंड। बॉम्बर भी है। तीन भी। कूद के देखो भाई, कूद के देखो। मैं जान मेरे पास आ like I सकता है, don't मेरे wanna पास kill वो तो हो गया गलती से। ऐसे सब क्यों रोटेट कर दिए? Because I thought तुम बोले बी पे बम आ गया इसलिए। बम तो आ गया। तो फिर क्या If like it just कोई तो कहीं है। मेरे को मैप में तुम्हारे स्पॉट सामने हुआ। से तू That ये sounds जानबूझ like के a मेरे very- सामने आया है। मैं चला रहा था, मेरे सामने चल that कर sounds आया like है। a skill issue गगन। बहुत वर्टिकल है ये मैप। आई कांट एम अप एंड डाउन। क्या है वर्टिकल तो है भाई? नहीं इसमें कुछ भी।
What do you mean you can't aim up and down? Man? कुछ भी तो नहीं बोल सकते है थोड़ा बहुत Palace इतना भी नहीं है dude. window Nuke compared to nuke. वर्टिगो जितना तो नहीं वर्टिगो तो भाई उसके नाम में ही वर्ट है. नहीं he's talking about palace aim करना and probably apps aim Yeah, करना. but like that's that. Not that. one more मेरे इतना रेंज ही नहीं है to fight SMG. मेरे पास भी SMG है bomb on me इसलिए मैं आगे जा रही हूँ एकदम. मैं नेड खाया मैंने बहुत गंदा वाला. कि मेरे को एक गन मिल जाए जो मिल गई अब. मैंने नेड हजम कर लिया. कॉबल भी बेटर है. आई हैवंट प्लेड कॉबल. आई डोंट नो. है ही नहीं कॉबलस्टोन तो. आई थिंक वो ना अभी CS:GO के जमाने की बात कर रहा है. डज एनीवन नीड अ गन आई कैन बाय. ग्रेनेड फेंक दे मेरे को पीछे. मैं कनेक्टर जा रहा हूँ एक बंदा. ऐश फेंक दे. तू एक खरीद ले. हेलो लेडी रेड हुड. ओके मेरे एक पे किल नहीं. लीडी वेरी लेडी. हाँ वेरी लेडी. वेरी लेडी. लीडी रेड हुड. दिन पे दिन लेडी होती जा. वाओ किधर मारा बे तू. मस्त मारा. कर रहा हूँ 1 मिनट. एक और मिड दैट फ्लैश. मतलब तू मरता हो रहा है. bomb on अरे me यार मैं मर गया फिर से. ऑफ ले लेना मेरी मिड से. बे यार एक साइड पे था. भाई I saw the whole screen. I can't. I don't know how to विंडो पे ऑफ. use विंडो पे ऑफ. AK properly. पीछे नीचे गिरी हुई है नीचे गिरी भाई हुई है. रेडलाइन कितनी क्लीन स्किन है भाई. ब्लडी जरा ऑफ गिरा ना. 10,000 दिख रहे मेरे को. ब्लडी 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 यू ब्लडी You bloody. You bloody you fucking cunt. इससे अपना बूटी हटा देगा. ओए 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 क्या अरे भाई, हाँ ये क्या? वापस ब्लरी बन गया. बड़ी जल्दी यार जी, बड़ी जल्दी देगी. हाँ मैं ब्रॉल खेल रहा था तो वहाँ पे बूटी क्लैपर्स बड़ा अजीब लगा. क्यों ब्रॉल पैलेस ब्रॉल किसके साथ खेल रहा है? मैं प्लेयर्स कैसी जीप लग पैलेस देख रहा हूँ. पैलेस देख रहा हूँ. one more outside aim है. भाई लिया पैलेस वाले. नहीं पड़ी. अरे एक था नाइस. बी पे कोई नहीं है भाई. मतलब मिड ध्यान रख. भी छोड़ दिया. नेक्स्ट मत छोड़ो. हाँ चलेगा रीटेक हो जाएगा 4 लोग. बॉम्ब इधर है. ब्लडी एक मिड भाई क्या कोई लग दिया. एक और है यहाँ पे. कोई लग दिया. सोहेल पूरा हक दिया. मैं ईगो फाइट क्यों लेता हूँ भाई. वाओ भाई क्या चांटा बजा. उसको पता है. सब पता है उसको. ये बंदा अभी भी मिड क्यों बैठा है भाई. Last मार तुम्हारा ये पे. सबसे हाँ हूँ हाँ यू. एक सेकंड अरिजीत. नहीं उसका YouTube पे भी नाम टॉक्सिक करी जीती है. हाँ How come I don't remember this person? वाओ फ्लैश बैंग है. सिटी फ्लैश कर लेता. ए बूटी का पैलेस का प्लांट करके सिटी क्यों खेल रहा है. एग्जैक्टली व्हाई. तेरे दिमाग के साथ खेलने. ये आउटप्लेड यू. तू हर दिमाग के साथ खेल. Premier I can't go AFK. Shit. मर के जाती हूँ. आई थिंक उतना सोचा है. कौन है भाई. अरिजीत पता नहीं. सब्सक्राइबर. गाना गाता होगा. ओए सब्सक्राइबर इसको बोल प्रो करना. बी रश. Sure. होल्ड कर एक बंदा ए होल्ड करो. मिड वाला रोटेट करो. आई हर्ड 2 पीपल एप्स. जस्ट स्टॉप. One palace dead. गोइंग बैक एप्स वाला जा रहा है वापस. है ना. क्या चूतिया. Oh, half HP Is bomb. anyone else at A with me? Yeah. Okay. Bomb half HP, huh?
बॉम्ब था किधर? एक वैन बी पे था वो। बी पे ही है क्या ये लोग? वैन नहीं आ जाए बी पे, हाँ। अगर बॉम्ब है वहां पे तो। नो वन ऑफ यू स्टे एट गुड शॉट। ये जाएगा। एप्स है एप्स नीड है और वापस जा रहा था आई थिंक। यू कैन स्पैम दैट। मरेगा। नाइस वन भाई। 1 सेकंड आई मैं। एड शॉट। भाई ब्लरी के अंदर ADHD तो कूट के भरा है। इसका क्या मतलब है? तुम जो तू कर रहा था भाई इतना देर से मैं देख रहा हूँ। Blurry. गन फेंक रहा है फेंक रहा है। AD4 के है भाई उसके। तो इसी वजह से मेरे डूम परफेक्ट तो नहीं हो रहा प्लान। हाँ यही हो सकता है तेरे ADHD वो मुझे लग रहा है उससे तेरा वर्स हो रहा है ADHD। वो इनकरेज कर रहा है तुझे। एक मिनट को ADHD पेशेंट ने ये रही। नाइस शूज तिशा। थैंक यू फॉर द गन। Oh, I was muted. Fuck. Nice shoes, मेरे. हाँ Thanks यार. यार मेरा नाक में इतनी खुजली क्यों हो रही भाई? कहानी में काट what? फेंक। अबे यार one palace. And somebody else also like flashed कहीं पे तो. मिड कंट्रोल गाइस this side मिड कंट्रोल। पैलेस बैठ है। ओ उसको लगी तो थी सही palace. ओ नहीं वो बैड ये लो। स्मोक अच्छा स्मोक है। मेरे को पता भी नहीं वो तुम स्मोक दो। मेरे को लगा तुम देख अच्छा लो। ये बताओ ना कहाँ वो ठीक है जंगल होगा नाइस। हेल्प करो। जंगल? नहीं आई डोंट थिंक सो। एक तो सीटी आवाज आई थी. स्लो मत जाइए जल्दी से जाइए। अरे प्लांट कहाँ हुआ है? नहीं प्लान नहीं हो। बॉम्ब अपने सामने ही है तो अंदर पैलेस। चल मैं मेरा नहीं है। मत कर चिल मत। प्लांट करेगा वो। सीटी जाएगा। स्मोक कर दे ये मेन को। भाई साइड कुछ अरे कॉम्स जा करो क्या? मुझे ही नहीं मिले कॉम्स। पता ही नहीं चलता ना फिर तुम मर जाते हो। मैं तो बोली थी सबसे पहले पैलेस एक है and somebody that flashed guy from died. main. Yeah. कोई बात नहीं दिस राउंड इज आवर्स। ये Don't राउंड listen to me. तुम लोग कैसे हो यार? मेरे को कुछ सुनता ही नहीं है मेरी बातें कोई. अरे मैंने सुना ना मैंने उसको नेट से उड़ा दिया यार। मैंने तो म्यूट कर दिया। ये मोलोटॉव कहाँ जा रहा है भाई? इतनी दूर नहीं जाता मोलोटॉव। इसने फेंका है वो। क्या फेंका है वो मोलोटॉव? मैं देख रहा था भाई वो कहाँ फेंका है भाई? इट वाज अबाउट टू कवर अ डिस्टेंस। दिवाली नहीं है सचिन भाई। तेंदुलकर घुस गया था मेरे हाथ। नासा भाई। One mid top. भाई ऊपर मिड टॉप। I don't wanna fuck with that dude. You don't have to fuck him. You just have to kill him. नहीं I wanna Am I fuck. hearing एक एमएन के underpass? बाहर था सोहेल एक एमएन के बाहर था। He's not very good at it. आप ये तो होल्ड ही कर रहे हैं भाई। होल्ड कर रहे हैं। एक पहले से गेम है। ये र्यूक लो है। एक पहले से गेम है रेड। Okay. आ गया साइड आए कूद के मार दिया। What a break भाई। ऊपर है। सेव कर लो। सब मेन पुश करते हैं। चलो 5 सेकंड रुक के नेट करेंगे ठीक है? 5 सेकंड नहीं 3 सेकंड रुक के। एक काम करो हाँ सब नेट्स खरीद लो। हाँ 3 सेकंड रुक के नेट करते हैं। 3 सेकंड रुक के नेट करते हैं वरना नेट नहीं गिरेगा अंदर। अरे श्योर कि ये बंदा स्ट्रीम स्नाइप नहीं कर रहा होगा? क्या पता? ओके 3 2 1 नेट। स्ट्रीम स्नैप भी होता है। कोई नहीं
पैलेस हो गया एक बंदा। एक मिड से आ रहा है शायद, पता नहीं। ये गन चाहिए क्या हो रहा है? Oops, I आगे died. आगे आगे कनेक्ट मतलब। हाँ ठीक है चिल मत। We got this. ये शॉट क्रॉस हो गया क्या? वो शॉट गया क्या? वन टू मोर मिड। एक मिड है। क्या चीज क्या? अरे बोल तो दे मैं अरे देख रहा एक मैंने मारा, मेरे को पता नहीं था उसके नीचे भी। अच्छा नहीं मेरे को लगा एक इधर है और एक भाग गया। Oh well, maybe stream snipe, maybe no stream snipe. चलो इसकी भी स्ट्रीम देख। ओ चल उसको स्ट्रीम स्वैप कर दे क्या? लूप चल रहा है भाई। टेबल स्वैप Who's the better stream sniper? कोई नेस्ट खेलो यार। मैं नहीं नेस्ट खेलता, को नहीं खेलना आता नेस्ट। Nest should be somebody who knows how to aim. Somebody who can off अब मेरे पास है ही नहीं, पैसे ही नहीं है ना उतने। ऐसे ही नहीं है ऑफ लेने के लिए भाई। और अवॉइड नेस्ट। 2 मिड थे। नाइस। एक और अपर मिड। ये मेन होगा, आई थिंक ये मेन से कुछ किया। शॉर्ट पे है क्या? एक और। लैडर रूम गया। अरे दो बंदे कनेक्टेड पे खेल। सब ऊपर है क्या ये? अबे क्या मारा उसने? Yikes. एक मिड है और एक शॉट था। सबके पास ऑफ है। I mean they've been winning constant, so आई थिंक दोनों बी गए होंगे। एक का तो आवाज आया। I have a feeling वो एक बंदा तो कर रहा है। I have quite possible. जब भी मैं भी जाता हूँ कोई भी आता है। वो तो जनरल भी लोग आते हैं ना, बट एक वैन दिखा तेरे को। पता नहीं, मैं भी नहीं दिखा हुआ है। ओ मारते घुस जा। पिस्टल यूज कर रहा है वो। अब हवा अपनी यूज कर रहा है। मिस कर रहा उसने। नाइस यार। वो रिलोड करना पड़ा उसको। ये बंदूक की गोली खत्म हो गई भाई। आप ले लेना उसकी। Now we have an offer. चाहिए आप? नहीं तू रख। होगी। बढ़िया चलाता है तो। थैंक यू। मेरे पास पैसे नहीं मैं है। अभी भी कंफ्यूज हूं कि वो बंदा सिर्फ P90 क्यों यूज कर रहा है। बंदूक क्योंकि P90 यूजर है ना। Is that a thing? मैं लिटरली उसके नाम नाम में लिखा लिखा है है भाई। हाँ नहीं वो तो समझ गया मैं लाइक कितना कोई यार मतलब। अरे मैं समझना is there like a lore behind it or something? अब वो उसको पता ना भाई। उसके स्ट्रीम पे जाके उसको पूछ लो। बैक स्टोरी क्या है? शॉट देख रहा है, मैं एप्स देख रहा हूँ। मैं बूस्ट ही आ रहा हूँ। नाइस। मैं अंडर पास देख रही हूँ। They're coming aim in, one aim in, two aim in. मेरे को गन किसने दिया? Do you need help? नहीं watch count. मैं मरा तो वाचिंग पैलेस। शॉट है, कोई शॉट है एक बंदा। देख रहा हूँ। शॉट कैसे घुस गए? ये स्मोक तो कर रहा है घुसने के लिए। शॉट नहीं देख रहा हूँ मैं अब। यस। एक और है। ओह माय गॉड, माय बैड। मैं देख नहीं रहा था डूड पे। डिंग टच। अबे वाओ। नो वे। मैं रिलोड एक सेकंड के लिए आई लुक्ड अवे। वो लिटरली रीलोड उसकी खत्म ही हुई और उसने मार दिया मेरे को। सो आई वेंट एंड पीक्ड। नहीं you Because I can't heard. spray FAMAS. FAMAS से Oh, ही I इज didn't डिंग। know that. ऑपर किधर था? ओपन नहीं था डूड। वन गाय इज लो एचपी। I mean, they might have taken your op, no? एक मिनट। नाइस। वन ऑफ यू हैज टू स्टिक इट। Nice. Dead, stick it. You can get off from jungle. ऑफ जंगल। Wow, you guys are so आधा good. करके So
so good player. भाई मैं 1 सेकंड के लिए कहीं और दिख गया वो आकर। नहीं उसका भी ट्रेड इंस्टेंटली नहीं आया ना, शिफ्ट हो करके ट्रेड नहीं आया। मुझको नहीं पता वैसे आप पे क्या चल रहा है। Sorry यार, It's okay. तू क्यों सॉरी बोल रही है? तू मेरे को बोला शिफ्ट होकर के ट्रेड लेने गई। तू नहीं, वो ले रहे Not हैं। you. Oh. पैलेस। Nice. एक मिनट लो है। मेन वाला P90 सॉरी P90 यूजर है। Palace dead. और चले जा अभी चल। मेन डेड। Why did I click away? किसका तेरा किल है? दो है। एक को मारा, दूसरा भी एक है। इधर 3v1। सोल तो अपनी छोटी उंगली से जीत जाए क्लच। सोल तो अपने छोटे उंगली के छोटे नाखून से जीत जाए। What the hell? How do you know I It'll be called? crazy if this guy wrote. Sandwich. Don't pick. I haven't. What if it goes B? थोड़ा सा तो डर का माहौल हो गया था। Oh, Another MVP. कितना 80? 82. क्या करें? शॉट रश करने नहीं यार, फंस जाते हैं हर जगह। स्मोक फंस जाओगे भाई। शॉट। बी रश। कनेक्टर स्मोक कर दो फिर। शॉट। कर लो। मैं But then don't stop. नहीं भर रहा बाजार। If you're gonna do short, don't stop. फिर तुम एक जन रुक जाते हो, फिर सब ब्लॉक हो जाते हैं, and then one by one we keep getting dead. बस 2 स्मोक थे के बहुत बढ़िया। कौन किसके पास है by the way? ओए भाई साहब। तो बरेटा है, भर देगा वो। दो लोग हैं नेस्ट पे। क्या मर जा भाई। हेड नहीं है क्या उसका? क्या है नाइस लेट्स गो। भाई? क्या कह रहा है भाई? कौन मरेगा भाई? मरता ही है वैसे तो हर बार। इस बार हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। इस बार ये घुसते विदाउट स्टॉपिंग वी क्लैप देम। ओके I'll flash. I'll smoke CT and flash. भरोसा है। बस घुस जाना, और स्मोक है तो मॉली है तो स्मोक कर देना। ठीक है? मॉली तो स्मोक कर देना। अच्छा हाँ। Yeah, use the fire to light it. लाइटर से माचिस चलाना। लाइटर तो माचिस जरा क्या चल रहा है भाई? वो थोड़ा अनपढ़ सा है, इग्नोर करो उसको। क्या करूं भाई, थोड़ा रीस्टार्टेड है। 2 शॉट। सिटी स्मोक परफेक्ट है ना? डन। सिटी अरे सिटी है। I can chill at sandwich, right? एक कनेक्टर है। लास्ट कनेक्टर। भर दिया भाई उसने। गन थी किसी पे? हाँ, यहाँ पे एक मैक 10 है। पीपी Ryzen मिल गई भाई। वो तो राधा को दे, he loves the PP. पीपी तो क्या स्पॉन रही है? यार इनको पीपी। हम तीनों क्या एक लाइन में है भाई? मैंने यहाँ पे ऑप नेवर माइंड, मैं मैप करने पा तो तुम सब लाइन में क्यों? मेरे को अलग क्यों कर दिया लाइंस? नहीं भाई नहीं करता हमारा लाइन। तू IGL है हमारा इसीलिए। Is it? इन गेम लूजर। भाई ओरायन धक्का क्या कर दिया तूने मेरे को? सॉरी यार। बेस्ट शॉट भी एक है। फक यार। मार दे। नेस्ट को छोड़ो। ओए ओरायन राधान को मैं पेल देता भाई। मैं राधान को पेल देता भाई। हाय स्पर्श, कैसे हो? एक कैप्स यार आई कैप्स है और एक साइट वाला लो एचपी। Hope all is well with you. एक ए साइड पे उसको दे। हाँ वो देख लेगा, राधान देख लेगा। ब्लडी तेरे को देखना है।
एक साइट है और एक एप्स है। ओह माय गॉड राधा, क्या खेलते हो तुम? बैन देख। अरे भाई ब्लडी। राधा, that was so funny, वो बेचारा मस्त धीरे-धीरे आ रहा था। उसने मेरे को देखा कैसे नहीं? मैं तो सामने से तो गया। I think he was like stupid like me. कुछ लोग ना फंस जाते हैं उधर। I always get stuck over there. यार, I don't like this. मैं कैरी हो रही हूँ गंदा सा। कितने गिफ्ट थे तेरे? सिर्फ 9। तो हमारे कौन से 90 है? हाँ पर मेरा बॉटम फ्रैग है, 800 डैमेज है यार बस। फिर अगर कोई मेरे को बोला तू कैरी हो रही है तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती सामने। I'll be like yeah you're right. बोल सकती ना? अंडर है क्या? जंगल? नहीं जंगल। सिटी कोई देखेगा मैं प्लांट कर रही हूँ। No info. Could be CT. Could be CT. Hey, connect. भाई बच गई मैं। नेट का फेंक दो। Nice. Wow, it's devils. What crazy cover. I don't know how I managed to like actually like live over there because my speed एकदम slow हो गई थी since I was getting shot. But I think he was really shit. जो भी था। SMG थी ना उस पे सारे पे नहीं। वो मेरे पास एक ही थी ना, मैं भी नहीं मार पाई। हाँ अगर ऐसे हो रहा है तो भागने की जगह ना बेस्ट से रुक के एक हेडशॉट। हाँ वो हुआ ही नहीं मेरे से। सिटी स्मोक कर देती है। फ्लैश। मैं जाऊँ? क्लोज फ्लैश किया। बॉम्ब। एक लैडर रूम गया। एक सीटी। एक लैडर रूम होकर होगा। भाई ऊपर कोई नहीं है। अबे भाई ये बॉम्ब कहाँ है? हेलो। कौन मरा? कहाँ? हम लोग ये आए ना? बॉम्ब लेके ही नहीं आए। कोई बॉम्ब लेके ही नहीं यार। कौन ड्रॉप किया? किसी पे तो था, ग्रीन पे था। ग्रीन कौन है? अब मैं मर जाता ना भाई अगर मैं बॉम्ब मिड पे लेके जाता। Green, what is the problem? Green. Meat side along run. Meat side along run. मैं मिड पे ऊपर को टप्पा दे के आया। Do you have? ऑपर है ही नहीं उनमें। है। अरे तो जो भी आया। अब होगा, अब मिल नहीं होगी। नहीं they have an offer. मारा था ना ते किसी सिटी पे को। था ना, सिटी पे था हाँ। ऊपर। इसको मिड कर दो अपन बीच को। इको था क्या? क्या क्राउच करके पीक कर रहे? गांड साला। धीरे वन शॉट। दो रोटेशन आएगा शॉट में से। सॉरी। अबे एक ऑपर मार्केट। ध्यान छो। काउंटर भी है मार्केट। किडो तेरा गेम है, स्मोक में चलेगा। शॉट के प्लांट। नेवर माइंड। तेरे प्लांट। शॉट वन। आई। Nice try. It's okay. We have a few more rounds. Round. एक दो ऐसा और वेस्ट कर सकते हैं हम। Hey kiddo. Nice. वाटरफॉल करेंगे ठीक है? एलिस से। I'll flash and I'll smoke city. बस घुसना है सबको। किडो। इको। राधा। इको है? Oh. I'm buying shields though. All go palace and just rush out. अरे क्या स्मोक डाला मैंने ये? क्या रे बाबा? एक वो फायरबॉक्स के वहाँ है मेरे को। I need help. दो साइड। Nice one भाई। एक कनेक्टर। He ate the. एक stairs. सिटी। अबे यार। अरे भाई मैं stairs पे भी था ना। दो जगह कैसे मारूं मैं? मेरा गन रीलोड कर।
मेरे FPS भी कम हो रहे हैं। अब सब लाइन में अलग है डेविल। बैक है। भाई वॉरज़ोन रैंक्ड में कल मैं अभी बीच में ट्राई कर रही थी, लॉबी नहीं मिली मेरे को। आओ ना। Stairs 1, stairs. CT हेल्प करो प्लीज। ऐसे मत खड़े रहो, ऐसे मत खड़े रहो। अरे सीटी किसी ने स्मोक किया ही नहीं। अरे यार गया गाइस। वाओ। एक बंदा प्लांट करो। दोनों कनेक्टर। श्योर। नाइस। नाइस MVP। नॉट से भाई। टॉक्सिक अरिजित तो भागा है। ये डेफन क्यों हो गया? चैनल तो पूछ लेते। इट्स डेविल्स। पता नहीं। राधा लेफ्ट। जाऊंगा बाद में आता हूं, 10 बजे आऊंगा। लूजर। खाने का टाइम हो गया। Yes, please. Want to go? I'll play one more. प्रीमियर लगाओ रैंडम के साथ या कॉम्पिटिटिव? कुछ भी लगा दो। कोई है कौन? मैं भी आऊं फिर। आजा। आजो। इनवाइट। तेरा डी रैंक होगा बट बोल रही हूँ अभी से। नो प्रॉब्लम, मैं डी रैंक ही करा रहा आजकल। वेरी नाइस। मन को अपना एक ही सपना बन के जाना है। 1K जाना। डैम। राधे भाई किधर है? राधे भाई चले खाना खाने के लिए 2 घंटा कैसे लगता है उसको खाना खाने में? मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। Wait, वो अभी रीजन आई कुछ डोंट खा प्ले वॉरज़ोन नहीं रहा इसको था? नहीं है। हाँ। वो खाता ही रहता है, वो थोड़ा है वैसा अजीब। लाइक ही इज लाइक सेकंड टू किडो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू फूड। द ओनली डिफरेंस इज किडो सब खा लेता है, लाइक इवन वैक्स स्ट्रिप्स। वो डैम भाई, क्या चल रहा है भाई? खाने की कमी है क्या किडो? बोल भाई, हम क्राउड फंड कर देंगे। द अदर डे व्हाट वर यू च्यूइंग ऑन? पेपर? अरे बकरी बनने की कोशिश क्यों कर रहा है भाई? पेपर, फिर पेन, और क्या खा रहा था तू? अजीब कुछ। क्या मेरे बारे में अफवाहें क्यों फैलाई जा रही? अफवाहें नहीं, ये सब स्ट्रीम पे होता है, ठीक है? हकीकत है, हकीकत होता है। Might not get tomorrow, let's do it tomorrow. Ban 2 maps. I love how everyone always bans this. Ancient is a good map. Anubis क्या must map है? I hate Anubis. मेरे को समझ में ही नहीं आता, और Ancient तो कभी देखा भी नहीं है मैंने। I like how you just started playing CS in your default map. क्या? I'm saying you have just started playing CS and your default maps are. I cannot. तेरा आवाज ना लास्ट कट हो जाता है पूरा। I'm saying you just started playing CS and your default maps are Mirage and. Well, isn't that supposed to be the thing? Ban Mirage one map. एंडी सुनाई दिया भाई। तेरा माइक ठीक कर तू पहले। मैं पीछे बैठा था, बहुत दूर बैठा था। इन लोगों की पता स्ट्रेटजी बेकार है। अगर ये चाहते हैं कि ट्रेन खेलना तो इनको ना वो करना यार चाहिए। वो छोड़ो यार, ये बस मिराज किसने लगवाया? इनको इन्फर्नो और ट्रेन में करना चाहिए, या फिर अनूबिस और ट्रेन में। मिराज क्यों लगवाया यार? कि भाई तेरे को मिराज से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, न्यू को ट्रेन में करना चाहिए था ना। हाँ भाई, तो मैं न्यू के चूज करूंगा भाई, ट्रेन के चूज। न्यू को भाई फकिंग ट्रेन बेटर नहीं है न्यू सर? हट, मेरे को ट्रेन के बारे में कुछ भी नहीं पता। I prefer train over nuke. ट्रेन सेम। मेरे को ट्रेन बहुत गंदा लगा।
I like train. नया वाला ट्रेन है। हाँ उसमें हेवन हटा दिया, हेवन हटा दिया। That's why the heavens problem. ट्रेन से ना भाई पॉप डॉग भी तो हटा दिया यार ट्रेन से, क्या मजा आएगा। वैसे वाली पॉप डॉग नहीं है, लेकिन वो है पॉप डॉग। वही ना, वो आइकॉनिक था भाई वो पॉप डॉग। अब क्या ही कर सकते हैं जो है। I like But this उन्होंने stuff. Hey यार, but सारे they- प्राइवेट प्रोफाइल्स क्यों होते हैं? 143 hours on film, which is a good thing, I guess. Oh my god, Heaven is from Ahmedabad. Damn. चलो एक तो है लूजर। तू मेरे को लूजर बोला? Just because हैं? I'm from क्या? Ahmedabad. हैं? नहीं, क्या मैं- बोल रहा है भाई ब्लडी? वो मैंने एकदम What- अलग no, बात what बोली। do you- what do उसका you इस mean, बात से bloody? कोई What लेना is देना this, नहीं है। dude? What do you mean bloody? What is this behavior? I thought I was his sister and we were like really good friends अरे- and everything. अरे And इस- तब मेरे को loser उस बोल बात रहा है का- अब। उस बात का इससे कोई लेना नहीं, देना तू नहीं है। वैसे अब change मत कर because you said it right अच्छा। after I said he's from Ahmedabad. Bloody, are you asking for it? Are you dying for it? चुप बैठ कटवा। ठीक है यार। बैठ शिट मार्केट लॉक। ओ बहुत वो गंदा मारा एक आगे साइड आ गया। ओह नाइस नाइस वन। भाई अहमदाबाद सब मार्केट से आ रहे हैं, ठीक है? तो लोग रहते हैं वहाँ। ओए और एक आ गया भाई। क्या आपस इधर में है? बच साइड आ गया, साइड आ गया। इधर साइड आ गया। टाइम किल यार रहने दे तू टाइम ही किल। लेट हिम प्ले, शट अप। आवाज ही नहीं आ रही भाई। नाइस भाई, वो टैप करता आवाज ही नहीं आती भाई डिफ्यूज की। ऐसा क्या? हाँ भाई तुम भी बोलते रहते हो ठीक है जब मैं सबके सब बैक सीटर्स। अब हम जाएंगे ए। सबको पीछे वाली सीट पसंद है भाई, कुर्सी चोर। मैं सीटी स्मोक दे रहा हूं। चल चुप रहा कर यार तू। सिर्फ रेवन को इम्पोर्टेंट होटल के कॉम्स दे corner वाली और सीट सब ना पसंद चुप बैठ तू। Raven attacked a teammate. Which teammate did he attack? मेरे को मेरे नाइस शॉट। एक ऊपर। बम फेंक रहा हूँ। सीटी से पड़ी ना मेरे को। स्टेट सर सीटी वाला बंदा अभी भी जिंदा है। चुप रहा था भाई। हमने पूरे एरिया में घर कर दी मर गई। लाइक और है जैसे अरे मैं प्लांट कर रहा हूँ मुंह के सामने। ईटी और टी दोनों साथ में चल के आ रहे हैं। सब मूवी का सीन चल रहा हो ना वैसे। भाई वो सीटी बंदा पूरा राउंड जिंदा रहा भाई। मैं तो भाई आ गई। अब राइन पे चली गई। थैंक यू भाई जिसने भी दिया वो। यही उठाई मैंने, खड़ी थी अभी। Going back here? Okay. स्मोक करता हूं, वेट कर, उनको जाने दे, उनको बैक स्टॉप देंगे। मर गया। ओए मार खाई मैंने। वैन बैठा एक का स्टेयर्स। ग्रेट से मारा है। दोनों साइड में एग्जीक्यूट हो रहा है। एक सीटी ऊपर बॉक्सेस पे। अबे भाई पीछे का शॉट गनर है वो पीछे आ रहा। हम लोग क्यों स्प्लिट करके गए थे? मेरे को नहीं पता ये लोग वहां क्यों गए। दो बंदे बोले ये बता रुक के देंगे हमारी टीम वहां पे। ब्लडी भाई आपकी इतनी हेल्थ कैसे कम हो गई? बॉम्ब उनके पास है तो वो लोग मोस्टली बॉम्ब ही होल्ड करेंगे। शॉट से मैं उतना जाऊंगी स्टेट से। यहाँ से स्मोक फेंकी बी के लिए। दिखे दिखे देखो सामने बंदा शॉट पे बंदा है। कनेक्टर शॉटगन चला रहे हैं। नाइस ट्राई। इसलिए मैं बोलूंगा सर से मैं इतना लो इसलिए हो गया क्योंकि उसने उछाल के मेरे मुंह पे शॉट कर दिया। मैंने इतना गंदा नेड खाया था पहले। साथ में ये आ जाओ, साथ में।
Meow 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 meow. अब यार अब वो दिमाग खराब Raven, why is your name Raven? डोंट नो मुझे याद है लाइक मैं देखता था सो आती थी पहले उसमें थे बंदे का नाम नॉट द Teen गॉड Titan. ये अंडर पैलेस चेक करना। एक कनेक्टर स्टेयर्स आया। प्लांटिंग प्लांट एप्स का प्लांट सीधे तेरा ओ स्टेट की दो और एंड वेव मत आओ I have to move. Don't peek connector. Hey, I have to move. I can't. Only है वहाँ पे। छुप रहा ब्लडी छुप रहा ड्रिफ्ट करेगा तो निकलियो एक स्टेयर। नाइस। नाइस लास्ट भी उधर ही है। कनेक्टर ही है। स्टेयर चढ़ गया। स्टेयर ले टाइम इट्स प्लांटेड फॉर यू। निकल वहाँ से निकल Unless you smoke it. Fake है भाई। मार Chill. मस्ती कर ऐसी गोली मारो गोली देखो नीचे आ रहा है तेरे पे आ रहा है। ऑफ सेव करने जा रहा है भाई। Nice. ठीक है देना तो पैसे किसी को No. उसका खून सूख गया होगा। पागल हो गया था बता मार रहा है तू घुस रहा है मार लो डैमेज भाई तुम्हारा काम। अरे ओराइन को पहुंच। Thank you. A again? चलो Okay. सिटी स्मोक दिया मैंने। ए दो है। ओह, क्या खाया भाई। मिनट घूम रहा है Are they close? हाँ शॉटगन है। शॉटगन लेके बस वेट स्पॉन कर Right, I'm going to bait myself for you. You just triggered a skill. बैठेगा तो And smoked off भाई। Chill, don't peek. सारे बंदे स्मोक ऑफ Trying to. He saw you. Right. Got that guy? One stairs. अबे यार एक वो भी था ट्रिपल बॉक्स। अरे हेवन क्या बॉक्स? नाइस। वेट ट्रेड नाइस वन किडो। ब्लडी भाई That was the biggest risk I took. भाई यार, ये तो देख के फट गई भाई तूने जिस तरीके से पीक किया। No, but he was close, right? And पीछे ये It's Devils था तो It's Devils at least trade ले सकता था वहाँ पे। मेरे को जब तुमने बाहर पीक किया ना मेरे को स्टेयर पे और वहाँ पे कनेक्टर पे बंदा दिखे। बट वो पीछे स्मोक टाइप था ना तो I was like okay कोई बात नहीं। रिक्स ले लिया मैंने थोड़ा। बी जा। बी जा रहे? ओके। क्योंकि शॉटगन वाले थोड़े डरावने ही होते हैं। Nice one. ब्रो ने मोनेसी को नहीं मारा, मोडेस्टी को। अरे ऑफ चली गई भाई। शॉट क्लोज मारो उसको। कुछ जाओ फ्लैश दिया। एक क्लोज है लेफ्ट। नेट करो ना। वाओ। मार दिया ना। एक का मार्केट है मार्केट। प्लांट। बस नहीं आएगा आपका। दोनों वही है। शुभम्स वेरी लो क्या? फक। तेरे ऊपर ये टेबल। खेल रहा है। वे कहां से है? दिखाई नहीं। विंडो से। अरे यार विंडो से उछल के आ। ठीक है इधर पे I could not see him. तूने क्या स्मोक किया? स्मोक गलत खेलता नहीं स्मोक गलत नहीं but he could see me, I couldn't see. That's what happened. तेरे पीछे था वो। वो निकल गया साइड से स्मोक से वो। Oh no, am I poor again? I am. Where do we go? कहाँ जा रहे हैं हम? I think हमको यहीं रहना चाहिए। Yeah, I feel like A is good. सिटी स्मोक दे रहा हूँ, मॉली आएंगी उनकी मेन पे। आओ एक मिनट। I need my game बड़ा चालू थी इसमें। I'm gonna have to like do a timeout after this cake cut करना है। One close. Palace. अरे डिंक खाई उसने। मारा। तीन निकल गया भाई। What the hell?
ये स्टेयर्स देख स्टेयर्स। भाई मेरा गेम हक दिया। हेलो भाई हेलो। क्या है ये? हाँ हाँ भाई पता नहीं मेरा गेम लैग आउट हो गया था। सेव करता रहा बैठ के उसके तो मैं अकेले जिंदा हूँ। सॉरी अबाउट दैट। यूके सबने हम मिलके हवे नहीं नहीं वो विनेबल था यार, पता नहीं लैग आउट हो गया मैं एकदम। वहीं पे चलता गया आई थिंक आगे। इतनी गंदी मार पड़ दी ना मेरे को डिंग देने के बाद भी। सेव करना पड़ेगा। मैं जाके मिड पे ट्राई करता हूँ, पिटता है कोई तो फिर से टाइम आउट कॉल कर सकते हैं हम। क्रेजी। कौन है भाई? कर लो। कौन है? लो रेवन ही है और कौन है? रेवन है। लो मैंने कर लिया। थैंक यू। मैं आई हाँ सॉरी। एक और भी यूज कर। वीडियो मेरे 241 किल्स हो गए इस पे। नाइस। किस पे? आप टेबल पे। क्या फेंका ये? ड्यूअल बरेटा क्यों फेंका? रन में आप पे नाइफ थी, इसमें नाइफ थी वो राजा वहाँ पे दिया था। एक और करना है। कर दे। ये पैसे कहाँ भेजे? तूने बाय कर दिया पिछले वाले पे। अब ये मैं इसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा ताकि और एक टाइम आउट मिल जाएगा। एक घंटा टाइम लग जाएगा। करो मैं डिस्कनेक्ट करो। फिर उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ तो एक और एक टाइम आउट मिल जाएगा। नहीं भाई वो लोग चिल्लाने लग जाएंगे हम फिर। नहीं मिलेगा। एक ही टाइम मैंने अकाउंट पे में ट्राई करते हैं ये गुड। एक्चुअली डीसी हो गया वो तो। अरे अरे पागल। ये कौन सा स्ट्रैट है भाई? ये कौन सा स्ट्रैट है? सो सॉरी यार। हाँ, मेरे को she's back, अरे यार she's जिया back. का केक कट कर रहे थे। युगी Wait, 2 what मिनट is में happening? पहले ही कर देते। आ अरे गया, हमने स्ट्रैट बनाई भाई। पहले तीन टाइम आउट करे हमने, फिर एक बंदा लीव कर दिया। 2 मिनट और। थैंक्स। आपने मिलेगा लास्ट टाइम से अब कुछ नहीं मिला। भाई अभी तक अपना फर्स्ट हाफ खत्म नहीं हुआ है। नहीं भाई अभी तो 4 राउंड हुए सिर्फ। 7। व्हाट डू हेली? ये रेवन What इन the गेम hell? क्यों बात करता है? मेरे को नहीं समझ में आता। एक नीचे अंडरपास। नेक्स्ट टाइम अगर तू मिड रुकने वाला है तो बॉम्ब मेरे को Connector दे dead. देना। One more connector. Oh, how does he kill me through the fucking wall? Nice. Are we going A now? Okay. Short and window. एक का विंडो। पर मत पीछे। Nice. Last shot. नेट मारते से जंगल आ सकता है वो शॉट से। नेट मारता है। Short. Wow. ए यार। एंटी। Good round. Good eco round. Man. पीछे चले Good जाना eco था। round. I want dot crosshair. Do you want an op? It's devils. ना ऑफ नहीं हो रही अभी थोड़ी। नहीं Who's me? Raven. ऑफ। एक खेल है क्या? मैं स्मोक कर दूं फिर। Yo, he has cool skin यार। बॉम्ब तो लिया ए नहीं यार हमने। मेरा जंप नहीं हो रहा यार। वो गलत हो गया मेरा। नाइस वन। ये तो भाई ऑनेस्टी के पीछे ही पड़ गया। सोहेल तो भी Dead, ना triple तेरा dead. गला भी। My bad. मैंने हर जगह स्टेयर्स। I hate you guys. One shot. जंगल शॉर्ट है जंगल में। I hate Short you smoked out guys. जंगल कनेक्टर आ गया। जंगल ओह माय गॉड नो One फकिंग connector, one jungle. नीचे के लास्ट jungle.
Wow. Why do you hate us? क्या हुआ? Body block. I don't want to talk about it. Not you, but like this Sohil guy. पहले तो अच्छा, I had to stop shooting because he decided he wants to stand right in front of me. I don't know for what reason he decided to stand right in front of me. And then जब flash आया, I'm trying to move, and this guy is not moving. Hey. So I'm dying. Dying नहीं, I'm dead. इसको पता ही नहीं Discord में बात कर सकता है, हमारे साथ ही है. Yeah, why is he muted on Discord? पता नहीं. One more close. Close where? Blurry मेरे को grenade bomb. क्यों मार रहे थे मेरे को? What? बदला लिया जा रहा है मेरे से मेरे को मार के. ये क्या मारा? मैं रबर बैंड हो गया. लाइक पीछे से शॉट्स पड़े मेरे को. Why did they? How? Nice. एक अंडर पैलेस था. एक ट्रिपल बॉक्स था. हट गया बेचारा. नहीं करेंगे पुश अप. सेव कर. ये मेन. कैंपर स्मोक कर दे इसको. स्मोक करने कोई जगह होगी बोले तो. Hi super. तुमको लगा तो निकल गया लॉग. ये जाए खड़े. बस सेव कर. फिर हाथ नहीं तेरे को. ये कॉन्टेक्ट फाइट. भाई डिसाइड कर ले, पहले बोलता ए था फिर बोलता सेव कर. अरे just let him play यार. I think that's the best. अब मत मरना भाई. गन भी जाएगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे. जाने दो. जानती है को. क्रेजी. भाई डिस्कॉर्ड पे बात कर लेना, ऐसी क्यों बात कर. आदत हो गई बटन दबाने की बोली. Are we saving again? We should, Probably. right? I am saving. अरे बड़ी भाई कौन से गन है भाई? Wait, what? Nice one. Guys. I'm so sorry. Nah, bro. Oh my god, 2 people made, man. I wouldn't pick that. Bomb drop करो, रेडी दी bomb drop. ब्लरी तेरे को एक मिलेगा कनेक्टर मेरे को पे. चाहिए. पुश अप कर रहा है ब्लरी, जल्दी जा. नहीं लगे. एक अंडरपास गया. अंडरपास वाला बहुत है. ऊपर एक साइड पे. क्लोज आ रहे हो रेड. पॉकेट क्या बोलूं. एक ऊपर है साइड पे. बॉम्ब ड्रॉप हो रहा है ऊपर. पीछे गन पीछे. Nice. Is everyone dead? Hi. एक नेस्ट. वन ऊपर. मार्केट था आई गेस जितना लास्ट. बेंच बैठा. बेंच है. एक बेंच बैठा. I swear to God, I will kick whoever keeps talking. बेंच वाली कॉल 3 बार 3 लोगों ने दी है भाई एक साथ. 50 स्पार्क बोलने की जरूरत है. एक म्यूट हो रहा. वो शॉटगन लेके आएंगे क्लोज. Nice. यार अंदर पहले. And smoke. I would say push कर दे किडो. जंगल. सिटी. साइड ही बैठा है भाई. जंगल है. सिटी प्लांट दे रहा हूं मैं. भाई होल्ड कर. यहीं बैठ बस.
एक बंदा कनेक्टर देख लो, ये मारना चाहिए। कनेक्टर वन अबे यार ऑपर इज कनेक्टर। ऑपर कनेक्टर। शांत। वो कहाँ से वहाँ कैसे आ गया भाई? क्रेजी है। नो उसका आवाज ही ऐसा है। जंगल वाला है dude। पूरा घूम के आया वो। I thought जंगल वाला कनेक्टर दूसरा आया था। Never mind। कोई बात नहीं। गुड ऑफ। But whatever cake, whoever made that homemade cake was so fucking disgusting. I can still taste like it was you know, I still taste that kacha flour wala taste. Oh my god. That's me making things bad in the air fryer. Air fryer में flour at least आधा घंटा गरम होता है। मैं डाला। Did this bitch really just smoke and disappear? One more on the right. Close right. अबे Nice, good trade. अरे बी पूरा खानदान बी। हाँ कोई नहीं। रीटेक साथ में रीटेक। नाइस कर दिया भाई ने। 1500 इजी बेंच लास्ट। 1500 मिलता है? हाँ क्या बात कर रहे हैं? लास्ट किधर है? बेंच मारा है मैंने उसको। नाइस। मैं पे गाने चेंज कर रहा था, पता है? ये तो अचानक आके प्लांट करने लगे यहाँ पे। जाके नाइफ करेगा। मैं ऊपर छज्जा रोक रहा है। ब्लडी गोटे में गोली मार दूंगा तेरे। छज्जा तोड़। छज्जा कूदने नहीं दे रहा मैं। क्या बोला उसे? छज्जा। ओके। रूफ। No, I want to learn the word. Khajja. छज्जा। छज्जी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। छज्जी। हाँ छज्जा। Thank you for the 40. 25 kills possible नहीं है। मैं प्रीमियर खेल रही हूँ यार देवियम। And I'm new at the game ना? Very new at the game. I think मेरा highest अभी तक 40 क्या 20 किया होगा शायद। अबे यार सैड हो गया मेरे साथ। पता नहीं ऐसे स्टूपिड पीक किया। नहीं मैं पागल पीक किया बस। क्या भाई what the hell man। फट गया। भाई राउंड क्या हारे हम भाई। Still learning Devyam, but thank you for the 40. I appreciate it. नहीं किडो क्लच करेगा। वो मिड पे गन्स लेने जाएंगे कनेक्टर पे। नाइस। I think you have this. टाइम एक शॉट होगा। ए क्लोज मार्केट क्लोज। नाइस ट्राई। कोई बात नहीं। I think guns जाएंगे। भाई तेरे को फुटस्टेप आई तो स्मोक कर रहा है वहाँ पे। नहीं कोई बात नहीं। वो भी टाइम Realistically Devyam, I'm telling you नहीं होने वाला because अरे वो अपन पे स्मोक कर लेता। I mean जब स्टिक कर रहा था तो I mean मिड पुश करता है। 2 जने थे ना तो भी मुश्किल हो जाता ना। बट इजीली कट जाएगा। कटा तो कहीं 74 भाई। तुम्हें ज्यादा पता। Experienced. Oh my god, I'm missing every shot भाई। किडो कितना अच्छा खेलता है। हे बॉम्ब मिड है। मैंने मिड पुश किया तो कोई आया नहीं इसका। फट गया भाई मैं। क्या नेट खाया तुम? 2 नेट खाया भाई। पीछे मरेगा। ये लोग ये जा रहे। पक्का? Any gun? हाँ उसका आवाज आ रही है। Oh yeah.
प्लांट हो गया है गन चला लेडी गन चला थ्रो गन। ओ तुमने गन कहां से आ गई मेरे पास? साइड फायरबॉक्स नाइस वन। विफ गन है पैलेस पे गन है। ले लो। पीछे गन है यहाँ पे गन है। So bad that guy. ये Thanks for the gun जिसने भी दी थी मेरे को। I think Raven था। If you have done 25 kills then 1000 let's divium. नहीं हो सकता 25 तो भाई मेरे से 10 भी भाई मुश्किल है। उसने ये नहीं बोला एक गेम में। हाँ बस हो गया डिवियम भेजो 1000। What if I tell you I have 83 MVPs in the last 4 days? Come on, chop. 4 days is insane man. नहीं 5 days हो गया तो। How many games have you? नाइस मॉली यार। वो नहीं पता मेरे को। Mid top? Yes. Can someone engage me? Palace dead? Oh my god, one more aiming. How? तूने मार दिया? Yeah, one more. एक और aiming? Chill. Just watch palace for me. I'll chill in. I don't know where my grenade went. It's fine. नहीं है वापस गए। ये one inside Tetris. Dead. One more. Half HP. One more Tetris. Both coming में। Nade कर दो ये मेन किसी पे है तो। नहीं अभी। Last and low था। क्या मार दिया? MVP एक और ऐड हो गया। 85 84 नहीं 84 पे हूँ अभी। दो बंदूक दो कोई। कौन सी चाहिए? कोई भी दे दो। थैंक यू। ब्लैक लोटस मस्त है यार यहाँ फोर स्किन। भाई फिर से डिस्कॉर्ड पे बोलो यार सुनाई नहीं देता। एक तो विस्पर करता है पता है ये? हाँ। तो जोर से बोल देते मम्मी मारते हैं क्या? पे नेड बूट सब हो गया भाई। आजा। कॉल देना होता है भाई की यूटिल आ रही है। तब बीच ठीक है नहीं भाई मैं तो मिड था भाई। Nobody is coming here, right? बॉम्ब अंडरपास। मिड हाफ एचपी। अबे यार वो एंगल होल्ड करके बैठा है। माय बैड। अब बॉम्ब ऑन योर लेफ्ट। I know bomb is on the left, but like, what the fuck do I do about it? सब पिट गए भाई मिड पे। Yay! Actually, I should save. कौन? सोहेल। Fake bomb defuse and plant कर रहे हो? No. That is all like useless behavior. दूसरा भी तोड़ दे। Flash on A. 1, 2 flashes on A. एक है A में। मेरे पे ही नेड आ गया मेरा खुद का। One palace. साइड घुस गई। हाँ मैं मूव करते करते फेंका ना। स्टेयर We have an op now. Oh, now you guys are saving, so I'll also save. Fuck it. सेव कहां फोर्स में करो। कौन सेव कर रहा है? कोई सेव नहीं कर रहा। फोर्स। Okay. अभी जितना प्लेयर एमिन पे मॉली डालना मैं क्लोज पैलेस के अंदर खेल। ले अंदर पैलेस। अरे 4 ए आ रहे हैं। अरे मैं मिड जा। छोड़ो डोंट मॉली। Too late. स्मोक कर दिया तूने। स्मोक हमारा स्मोक कर दो। अच्छा तुमने स्मोक कर दिया वहाँ पे। Nice. 2 मिड है। यार साला ये राउंड 2 मिड आए साला। लास्ट राउंड जब मैं ऑफ कर रहा था Because they had an op, no? That's why they would go mid. शॉट। No, but the 2 people who came mid do not have an op. अभी आए तू op ही मरा है ना?
अभी। No, I died to पैलेस एक ब्लरी और को कमिट पे। I got one कनेक्टर के पास। सही देख रहा था, मैं मिड बोल दिया, मैं मिड देखने लगा। बॉम्ब अरे यार मैं शॉट शॉट चल रहा वाला था यार, मैं गए सारे शॉट गए। साइड One was at short. I don't know where the other guy is. both side एक You got this well. Nice shot. नाइस। Too easy for Slay Squad. उसके पास किट है, उसके पास किट। अबे क्या देख रहे हैं? टाइम है ना उसपे। अरे व्हाट द हेल, व्हाई डिड यू स्टॉप डिफ्यूजिंग? कर दो भाई स्टिक। नहीं किट है तो वो जगह अपने स्टाफ में छोड़ो। कर दो भाई, तुम यहाँ पे हो तो क्या ही शिट होना नहीं है। बस थोड़े ऑफ कॉम्स आ रहे हैं। बहुत खराब। हाँ बहुत ऑफ कॉम्स भाई। I don't have money. What the? तुझे पता था मैं प्रीवर नहीं खेलता, पता है तेरे मैं को। नहीं ले रही किट। ले लो, अभी बंदूक दे दिया मैंने। कैसे आ गई मेरे पास बंदूक? You can buy armor also. Did I have armor? Thanks. Will do. मैं मॉली कर रहा, मेन कोई और नहीं खेलेगा अभी। तोड़ना। I'm watching underpass. I'm no longer watching underpass. One palace. मैं रोटेट कर रहा हूँ सिटी से। Should I? मचा रेवन मचा। I'm not peeking mid. Oh my god, that nade, I ate it. Are they doing B? मना कर रहा हूँ, मचा क्यों जा रहा है पता नहीं सब। मैंने क्या काटा मत कर, मेरे क्या गलती से। Are they doing B? Yeah, they're doing B. यार बी क्या हो गया? बी पे कैसे चल गया भाई कंट्रोल? एक कार में भाग गया, पता नहीं इसमें मना करा कुछ। मुझे लगा खाली है। दोनों को चमका दिया भाई फ्लैश ने। Thanks. खोपड़ी में बजा है। 51 मारा था। अरे खोपड़ी में बजा। बी पे यूटिल स्पैम किया करो भाई। मॉली और नेड हमेशा होनी चाहिए और स्मोक। Okay, I'm pushing underpass. One B. Mid top 2. I think एक ऊपर है। B आ रहा है। You have gun, red. You have gun. I know. एक मिड टॉप है, मिड दूसरा आ टॉप। गया। TNT. अच्छा अंडरपास पूरा वाला low है। अंडरपास चेक कर गया था पता है? क्लियर किया, वो पुश कर देता मैं पुश करना। डुएबल है। वन अंडरपास गए हाफ एचपी। और एंड पैलेस से अगर कोई आ गया ना बढ़ जाएगी तुम। मिड पुश ब्लरी आगे जा। शॉट विंडो बंद करिए मुझे। मेरी भाग पीछे तक गलत नहीं। अबे यार ठीक है। होल्ड कर गया एक बंदा तेरे को अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ से कहाँ से जाएगा भाई? आवाज है। टिकल पड़ी। कोई गन ही नहीं थी किसी पे यहाँ पे। टिकल से। मुझे लगा होगी किसी विंडो। सारे बंदे विंडो के बाहर मरे हैं, विंडो में तो मरा ही नहीं है। डेड बॉडी मिड पे क्या कर रहे थे इतने सारे बंदे हमारे?
Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Fire low. मिड ही आएंगे वो 2 लोग, ये 2 लोग मिड आएंगे, एक पैलेस आएगा। Grenade out. बी फ्लैशेस। रोटेट कर लो, बी पे रोटेट कर लो भाई। मिड है, मिड है। अभी रुको जाओ, अभी रुको। मैं सी फेक कर रहा हूं। ये बोल पता और जब बड़े तो शॉट एक इन्फो दे को तो क्या भाई क्या है मेरे तेरी बोल रहा है शॉट जा, तो मैं शॉट देख रहा हूं, उसका नहीं उधर कूद गया। तुम लोग मार दिखाने मत दो। नहीं और एक है मिड पे है और 2 लोग हैं मिड पे, एक हाफ एचपी है। एक 2 लोग मत तो देख बंदा बी पे एक सीटी था। व्हाट द फक। बैठा हुआ है मार्केट वाले फ्रंट में। जी जंप स्केयर हो गया मेरे साथ। चलो भाई मेरा हो गया। बाय भाई मतलब फ्री बनने के लिए 300 माइनस लगे मेरे को हेल डाउन। ठीक है माइनस लग रहे हैं आजकल। एक ही तो हारा है, तो 300 के माइनस हुई थी। तुम लोग के कुछ के रैंक नहीं है, बेड रैंक है, इसलिए मैं ज्यादा लगने मेरे को। इनवाइट मेरे को इनवाइट करो कोई। Can someone else Join. host? मैं बोला बंदे को बोला, मैं एक मेरा फ्रेंड है, वन ऑफ माय फ्रेंड। लीव कर दो। हाँ वापस आ जाओ। मैं बोला किसी को अपने फ्रेंड को बोला, बच्चा है लेकिन वो Is he irritating? ना, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं ज्यादा माइक नहीं खुलेगा वो। Okay. प्रीमियर ही लगाओ। हाँ बुला रहा मुझे, बस बोलता वेट से। मैं 1 सेकंड आया। हो गया 1 सेकंड। आया 2 मिनट। ओके चालू कर दे रहा हूँ। पता है किस क्लास में पढ़ता है बच्चा? 9th में है। ना किडू भी तो छोटा है। That's like kiddo का class. किडो 20 इयर्स का है, बोलो तो 3rd ईयर में था किडो। तू कैसे किडो बोल रहा है सारे? तेरी नाम पड़े इधर मुझे क्या भाई, आगे फेंक दूंगा। पेंचो ये कहाँ लिखा था मैंने? तू कौन से कॉलेज में है ब्लडी? कॉलेज कौन से आते हो? डस्ट टू मैच बताना प्लीज, और कोई मैं चल खेल लूंगा। मैं डस्ट टू मैच नहीं, डस्ट नहीं मैं बोल रहा हूँ, प्रीमियर में ट्रायड बंदे आते हैं ज्यादा, तो डस्ट टू में बहुत दिक्कत करेंगे। चलो गाइस, see you guys have fun. Good night. Bye bye. Bye. Loser. Whoa. Let's roll. G2 और क्या क्या खेलना G2 और के भाई -G2 और मेरा एंड मेरा What are we banning? Okay. कुछ भी चलेगा मेरे को। इन्फर्नो कर सकते हैं, न्यूक कर सकते हैं क्योंकि रेवन भाई को नहीं आता। बाकी दोनों चलता मैं। अबे अनु एक अनुबस पे करो भाई कोई। अनुबस खेलना अनुबस नहीं खेलना भाई मेरे को। जिता देने से। This तू is जिता not देगा gonna तो भी be नहीं खेलना। fun. This is not gonna be fun. No, I don't stream on Twitch, Pranjal. I used to. This is not going to be fun. Let's roll. हरियन भाई ये देखिए स्टिकर उसका स्कोप वाला मस्त है ना स्टिकर सेक्सी है यार 139
Discord problem ना, I उतना guess. स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे दिखा रहा है और डिस्कॉर्ड का कुछ होगा स्टूपिड था यार, इतना भी नहीं था। By plus 357 minus 175 तो हारे भी तो I don't give a shit। मेरे को 200 प्लस में जीतना है। मैं ये जा रहा हूँ, मेरे साथ एक यार अगले सीजन इसको डिस्कॉर्ड बोलो ना, डिस्कॉर्ड आएगा तेज। कौन मैं? हाँ ले देता मैं सर। रेप सर्वर वर्वर मत खेलना मेरे को भाई, रहने दो। नहीं यार फिर टीम कर दिया। अरे मैं नहीं आ रहा भाई, अगर सर्वर चेंज करना। ना ऐसी बात है दोस्त। फेंको मल्टीपल बी हो गया हार्ट बी। Counter 97 and 4 भाई हम लगते हैं। बॉट लॉबी आई। उतना मतलब शांत रहता आराम से मस्ती कर। ठीक है भाई, बॉट लेकिन इतना बॉट भी नहीं हो ना। लाइव है तो भाई लाइव तो अच्छी बात है भाई, थैंक यू भाई बताने के। एनवर्ड नहीं बोलूंगा। अच्छा वो बता दी। Hey, sorry. एक राइट साइड है। I can't molly दूंगा। Shit. Fuck off भाई। जल कैसे? ये जल कैसे गया? जला कैसे भाई तू? अरे नहीं एकदम लास्ट टाइम पे वो लास्ट सेकंड में स्प्लिट हो गया। सैड हो गया मैं साथ। जा रहा मैं ड्रॉप करना। स्पॉन नहीं तेरा पीछे। स्पॉन। अरे मैं ठीक है तो विशा तुम्हारे पे गन है, गलील है ऑलरेडी। ओके मिस्टर आईजीएल समझ गया भाई। I'm getting so fucking bored right now. I don't like this. मैं शायद इसके बाद नहीं खेल रही। अच्छी कर रहा है। बड़े बच्चे को बताओ कुछ। डिंग 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 डिंग। अरे यार 1 HP है वो नहीं मार पा रहा। ऑफ ले लो मेरी, ऑफ ले लो मेरी, ऑफ ले लो मेरी। बीच बनाना मरा मैं भाई। क्या निंजा थोड़ी बन जाता है नीचे में डिंग 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 करता है। गन ड्रॉप कर दो कुछ। डिंग को बोल रहा मैं डिंग। 64 था भाई। I'm not bored of the game. I just want my squad. कुछ भी करना बस मॉली मत करना मुझ पे। चल चल सेकंड मिड वेट क्लोज बेटा। नाइस वन। एक और है नहीं सेकंड आता एक बंदे को वापस ही को भी। कैसा खेल रहा है बताओ मेरे को। बनेगा ई स्पोर्ट प्लेयर ब्लडी भाई। अरे पता है रेवन भाई क्या बनेगा ही बच्चा ई स्पोर्ट प्लेयर भाई। उसको बोलना अपने दिमाग से निकाल दे सब चीज टाइम से रहे। लाइक ही प्लेड ई स्पोर्ट एंड वैलोरेंट सीएस में निकल पाएगा बस। इसको हैकर हैकर बोलते हैं सीएस में सब। सैड हो गया तो हो गया भाई ये तो फॉर चल रहा है। मेरे बंडल कितने लोग हैं भाई? सब लोग मिड पोस्ट है।
हट जाइए वहाँ से, बॉलर चाहिए, हट जाइए वहाँ से, फाइट मत कीजिए, चोक पॉइंट। भाई one more on the barrel. चोक पॉइंट पे इतना कॉन्फिडेंट कोई कैसे हो सकता है? एक बनाना है, 2 मिड है। Nice one. एक बनाना, 2 मिड से। बनाना डेड। फुट आए, सेकंड मिड फुट आए आप। वो ये है, वो ए पे बैठा है, लास्ट पोजीशन टॉप मिड। फोर भाई मच लग रही है भाई। गेम खेल आराम से। ऑन साइट है वो, नहीं है ऑन साइट। नॉक डिफ्यूज कर दो। स्मोक से ट्रैक स्मोक। वो भूल गया क्या? Oh, nice try, nice try. हाँ, स्मोक डिफ्यूज भी नहीं। वो पता है बाहर से घूम के आया। I'm not playing after this, by the way. थोड़ा बंदा बहुत था यार। कुछ नहीं। हुआ है क्या? रेन भाई वो दीजिए ना मेरे को एक नेड स्मोक ब्रेक करने के लिए। तुम बस कोई एक ही आओ मेरे साथ। No, not Minecraft. हाँ चलेगा मेरे को। I don't like playing the way we are playing right now. One at that car thing, kiddo. अबे इसको पता है। No. फ्री फायर करता हुआ है वो। एक बॉयलर हो। सिटी देखो बम ड्रॉप वहां पे बनाना ड्रॉप। It's not the premier. It's like I don't want to play with these people anymore. Like I want to play with my squad. There's 2 people I don't know at all. I can play with 1 person I don't know. And I hate it when कोई कान में बोलते रहता है कि ये करो ये करो ये करो। मेरे को गुस्सा आता है तो। It gets irritating, you know, like मर गए हो तो चुप रहो तुम। It becomes very boring, nothing else. तेरे पांजे क्या बड़ी हुई? तेरे पांजे क्या? नहीं बड़ी को बोल रहा कोई वो कर सकता है क्या ड्रॉप? मिस चाहिए लो। मैं सेव कर रहा हूँ। What do you want? MP9. Thank you भाई। करना है ट्रंक ड्राइवर। आ मैं बस स्मोक करा डायरेक्ट, मॉली के पैसे नहीं है। ऑफर वेट कर ऑफर होगा अपने घर का भाई। मैं तो ट्रंक ड्राइवर। एक डेड है। Let me It's okay, Radha, don't worry. No worries at all. हाँ एक पुश किया था। Like I'm playing with like these people are too good, nothing else. Like I prefer playing with people who are like more chill, even if they're good. जीत तुम लोग ऐसे रहे, मेरे को तो बस इसी के लिए मैं चाह रहा था। ऑफ नहीं ले पाएगा वो। I haven't got an elo yet because I'm still we only won 2 games so far.
I don't have elo. हाँ ये तो पता है बोला ही था पहले से like there we lose whatever. It's just I'm annoyed. I don't like too much comms. पुश करता हूँ कि बंदे मार सेलेक्ट नहीं करते। हाँ हाँ नहीं आप ठीक कैंप ट्रांसफर Yeah, I'm elo-less आज बस 3 person. सही है चलेगा। बस एक बंदा चर्चेस पे रहना, चर्च पे रहना और कोई फुट में देना चर्च पे। किसी को थोड़ा शो वरना इतना गेज हो गए तो भाई वो बंदा मेरे को एक्सपेक्ट कर रहा है, बंदे बॉलिंग कर रहे हैं शायद। पोटेंशियल वॉल Some more banana. बॉडी हो गया ये तो फ्रेंड। इनको पोजीशन एक्सपेक्टेड होगी, फुट दे सकते। एक डार्क है, एक चर्च है, प्रोबेबली पीक कर रहा। भाई साहब मेरा सर घूम रहा है। हो रहा है ना तेरे को भी इरिटेशन से सुन के? Are we rushing in, or are we going sneaky beaky like? नहीं, I don't mind the map. Deploying flashbang. Grenade. यहाँ पे बहुत मॉली वाली आए। Grenade out. Two banana. Throwing fire. मेरे को कॉम्स से ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक ही कॉम तुम 50 बार बोलो और लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग, व्हेन समबडी कीप्स टेलिंग यू नो कान में कि भाई ऐसे करो, वो करो, उधर चेक करो, ये करो, तब मेरे को चिढ़ चढ़ती है। एक सिटी But otherwise I'm chill. Like comms is okay. Like हम भी comms देते हैं सबको. But ठीक है, कोई बात नहीं. Happens. This happens with people who are very good players. Because उनके लिए normal होता है ऐसे खेलने का. Yeah भाई, it's normal. But हम लोग एकदम chill करके खेलते हैं ना. Like when I play with my people, there's a reason I play with them, right? Come on, chop chop. Laying down smoke. Throwing flashbang. Grenade. Multiple. Oh really? Other people also get bored of this? Spot Nana's always playing, bhai. One banana. Holy! One HP clutch, let's go. Why am I
1 HP. What the hell? Why is this guy AFK? Guys, मेरी फट रही है. Never mind. लेके चला जा भाई. I think Raven died. IRL. R.I.P. Raven. Understandable. Comms overflow से वो मर गया. I also wanna die. I'm telling you, comms overflow से वो मर गया. I know. हमारी बारी next है. मैं strong हो गया हूँ ये सब चीज से. मैं तो नहीं कर पाती, मेरे को बहुत irritation होता है. I'm not gonna lie kiddo, मैं तो mute कर देता हूँ. I get very irritated, especially when you're dead और फिर बोलते रहते हैं ना. हाँ मेरा वही हो रहा है अभी. Like I don't feel like playing anymore because इतना overwhelming हो रहा है अभी. हाँ वे ये ना ये बंदा सबको नाइफ करता रहता है, जीएस से मारता रहता है. It's very very बुरा. Hello Raven, are you alive? Muted है अगर तू कुछ बोल रहा है तो. No, I think he's still dead. I think I just want a W banana. मैं नेड हो गई. एक और. Oh, by the way guys, I'm not streaming tomorrow, or if I am, I will start directly at night 9 baje around for CS only. But most likely I'm not streaming tomorrow because I have to take my aunt to get a tattoo. Oh. And I might get one too. कौन सा? I've been wanting to get a Wegvisir on my shoulder since a while, so I'll probably get that. Let's see, depends on how expensive it. Wegvisir. It's an Icelandic magical stuff sort of thing that people use. Sailors used to use. Show them who we are. So they do not lose their path. Throwing fire. Nice one. One more banana. Hopper है. You have a nade on you. Incendiary. Throwing a grenade. Oh, mid है. 2v2 है. Mid top. I killed 3 people. Yeah. पिलाई कर दी उधर. Nice, just roll now. वो चौथा भी आ जाता पता है. हाँ मैं लो हो गई थी बट थोड़ी. एंड प्लस मेरे पे नेड खिड़ा था ना तो मेरा थोड़ा लेस वो हो गया था ऑलरेडी एचपी. वो बॉम्ब हम पे ही है. नाइस. रेवन को क्या हो गया है? पता नहीं. Second mid. Let's. Do you know मम्मी ने डांट दिया लग रहा है. ऑप सेव कर रहा है शायद वो. दूसरे वाले घर में लग रहा है. भाई के साथ रहता है, कुछ काम बता दे. कौन भाई के साथ रहता है? रेवन. ओह, आई थॉट उसकी मम्मी ने उसको मारा. नहीं मम्मी थोड़ा जोर से बोल दिया होगा. भाई ने मारा हो तो फिर
बस थोड़ा जोर से बोल हाँ हो सकता है। ये अपने 3 प्रीमियर मैचेस जीते हैं। he keeps whispering, no? हाँ आज तो हम जीते अच्छे पर। हाँ, we हाँ won 2 जीते 3 आज। total. क्रेजी। Only 7 more नहीं to go. चार खेले थे आई थिंक हमने, उसमें एक हारे हैं बस। हाँ वही अच्छा है आज का विन रेट देखने जाए तो। या गगन बनाना उसके बम में डालता है। ओए बनाना 1 2 मेरे सामने कोई था, उसको नहीं मारू इसलिए Sorry. मैं थोड़ा ये क्या वन टैप। बनाना भी तो बेकार है ऐसे एकदम जाना। एक्चुअली नहीं जाना चाहिए, प्रीमियर है, मस्ती नहीं कर सकते। हमेशा वो बॉम्ब नेड होता ही है। I like to मस्ती in Premiere. क्या? हाँ मस्ती अलग बात है बट बात नेड से खाना। नहीं क्यों भाई, नेड खा के भी उनको टप्पा दे सकते हैं, ऐसे थोड़ी। मैंने नेट खा के मारा था 2-3 लोगों को। अरे तुम्हारी बात अलग है, मेरी बात अलग है यार। तू भी मार सकता है भाई, तू हमारे से भी अच्छा खेलता है। It was so fun though. मेरे को बहुत मजा आई थी वो करने को। हम तो मैं तो कोई मारूंगा, अगले पे मारूंगा भाई 2 मिड टॉप। क्या मारा है मेरे को? ट्रेड ले लेता कोई, काश। हम लोग 4v5 खेल रहा है यार। रश करना है, कर सकते हैं वैसे। ऑफ आई थिंक हो सकता है उनके पास होगी ऑफ। होगी तो सेकंड मिड से रश करता है। सेकंड मिड से सेकंड मिड से जाके पहले सेकंड मिड से रश तो बता रहा था जस्ट। We should have actually saved. नहीं हमारा हमको इनकम मिलेगा। अबे यार ये दलाई लामा मादर बनाना पुश। आ जाओ भाई प्लांटर। मैं हग रहा मेरा माउस पैड खत्म हो गया। आर्चीज 1 आर्चीज शॉट आ रहा है शॉट। शॉट लास्ट। ऑलमोस्ट मरने वाला था तो शॉट थोड़ी है ये। हाँ भाई ये शॉट क्यों बोला तू? कॉम्स तूने मत दिया कॉल कर किया। भाई। तो मर शॉट वाला मार गया। तो गया, शॉट वाला मार तो दिया। वो शॉट थोड़ी था, वो ऐप से आया। हाँ तो आवाज उधर Axis से when आई they थी ना come मेरे from को। above, but like that short wala lane is short. That this thing is long or arches हाँ. or library. नहीं लाइब्रेरी बोल दिया करो, बेस्ट वही है। माय बैड बट आई थॉट वो शॉट बोला और वो ऐप से आया ना, इसलिए मेरे को लगा एक और बंदा शॉट। No इसको ब्लरी को स्पेक्टेट कर रहा था ना। तो तेरे को लेफ्ट पे आवाज नहीं आ रही थी। बंदा हूँ। मिड 1 मैं मर गया हूँ। अच्छा तुम ही हो बॉम्ब वाले। फक। एक सेकंड मिड था। हाँ यहाँ पे ऊपर बैठा था बालकनी में। ये कौन है? एक वहाँ है टॉप मिड। ओ वाह कंटेंट।
एक लास्ट का नहीं। हाँ दोनों साइड से दोनों। अच्छा भाई हाँ दोनों साइड। Oh well. मैं मिड पिक। तुम दोनों ऑपर्स हो क्या? तुम लोग पिक्स लो, ये बनाना पुश करते हैं। मैं वेट कर रहा था। We cannot really push banana. Oh, we can. They have nades. Nice one. Nice one. बी चलो, बी चलो। Smoke हुआ है वहाँ पे? वो ऊपर चढ़ा होगा शायद। I heard something. ऊपर ही है। थोड़ा जल्दी स्मोक कर दिया आई थिंक ना, है ना? प्लांटिंग कॉफिन वन आई थिंक ऊपर है। मैं छुपा हुआ हूँ न्यू बॉक्स। मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। Oh, better. टॉप ले लो। Nice one. मत देना, किसी को मत देना। नहीं मेरे को नहीं करना। आप करो करो करो। नहीं करना मुझे। और ये एक ही ले लो। मेरे पास है पैसा गन लेने का, मैं ले ली। I don't know Avi, I don't know if I'm playing more. Plus I don't know if you're chill or if you're annoying. What if you're annoying? Who was MVP? One. I don't know if we shot that or. एक अपार्टमेंट में ऊपर तो है ही। मर गया वो? दूसरा? दोनों मार दिए। दोनों। One more. I'm dead. Help me. I am not with you right now. It's okay. You got it. एक आर्चिस बैठा है। They don't have a buy, but ये इसकी एक उठा ली। गन होगी, दोनों पे होगी। One going short. One archman. Nice one. I'm not the best, but I won't gonna be last. भाई क्या बोला तू? मेरे को नहीं समझ में आया बिल्कुल भी अभी। What this English? Maybe one thing. मॉली कर रही हूँ मैं। नेट किया हुआ है। हाँ, nice.
One on the left and one coffin. Yeah. I mean, you can add me. कौन हो सकता है? एक ही चूतिया है जो आगे खड़ा रह जाता है हमेशा. There's only one person who does that. Sorry. Add John next. But is your Premiere open? And join Discord. दे रहा है अपना resume दे रहा है. हाँ, अरे मैं उसको बोला तू चिल्ले तो आ, अगर इरिटेटिंग हुआ तो मत आ. अच्छा तुम नहीं खेल रहा और? ठीक है. पता नहीं मेरा बड़ा सर दुख. It's fine, I mean, जरूरी नहीं है खेलना. One baller. फ्लैंक आ गया एक. Backstab. Oh. लो था ना वो, बॉडी लग गया. बहुत इरिटेटिंग है ये. ओरायन. सॉरी वेरी सॉरी. अबे बीच में मेरे को चाकू भी मार दिया उसने. यार वो तो पता नहीं कैसे लगा तुम मेरे What do you mean कैसे लगा? अरे तुम मेरे पीछे थे. नहीं. वो तो I was and very you know it's even worse that I was behind you and फिर भी मेरे को तूने चाकू मारा. वही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, लगा तो कैसे लगा. I really चाकू मारने वाली हूँ इसको. नहीं. कभी समझ में आएगा. नहीं. इतना इरिटेटिंग बंदा है ना, I swear to God. मैं पिटिंग की. एक ऊपर वो. Careful back nice. step, careful back. किसकी बॉली थी वो? I think इन लोगों की थी, हमने किसी ने नहीं. ओरायन तेरा नाम आया है. हैं? मैंने तो मॉली फेंका ही नहीं. तो कौन मारा? मैंने मॉली नहीं फेंका, मेरे पास तो है मॉली अभी भी. Okay. If you say so. प्लांटिंग. ओए शॉर्ट है. अरे साइड पे था. शॉर्ट क्या बोल. मैं छोटे शहर में नहीं रहती ना, वही प्रॉब्लम है. Do you want money? I mean, do you need a gun? Okay, you have money. No, I have money. Southern India episode, yeah. Asshole, this guy. नीचे देखो. गांड मरा तू अपनी. भाई. ओए बम आया. किसका बम था? मेरा था, वो बाउंस बैक होके वापस आ गया. समझे बॉयज मैं जो कहना चाहती थी. अरे वो तो गलती से आया है. एक बंदा इधर मार दिया. ये स्मोक तुम लोग ने किया था? नहीं उन्होंने किया है शायद. ब्लू स्मोक देना. मुझे नहीं पता चलता ब्लू स्मोक. वो हल्का सा टिंट दिख जाता है. ओके. He should be banned from this game. उसको बैक बैन मिल जाना चाहिए. नहीं मैं वैसा मारता नहीं हूँ किडो जैसे पूरा. हाय हीरा. मैंने कहा मारा मेरा मिस्टेक होता है सिर्फ. नहीं मिस्टेक नहीं हो तो मेरे को पता है तू हमेशा मेरे को ही मारता है सबसे ज्यादा. एंड आई नो व्हाई, क्योंकि आईआरएल नहीं मार सकता. लिटरली एक हफ्ते बाद हुआ है यार. आई एम सो सॉरी. अभी तक पूरा एक हफ्ता नहीं लगा था. चुप बैठ. डोंट आर्ग्यू विद. एक मिनट है. Are you taking his off? कहाँ से पड़ी थी को ओरायन? वही वो जो पीछे होता है ना उसके. हाँ बैरल के पीछे.
अरे यार push क्लोज up. आ गया था पुश कैसे सॉरी किया ये? चल के पहले ही आ गया होगा, पहले ही आ गया। नहीं नहीं, किडो होल्ड कर रहा था ना, इसलिए मेरे को लगा। नहीं वो दूसरी साइड से आएगा तो नहीं दिखेगा ना। तो हमारा बंदा भी एक कम है तो फिर लाइक इज वेरी बहुत टफ। टफ। इट्स क्रेजी, हम बैक टू हाँ बैक या अभी इतने सारे राउंड्स निकाल लिए। देख ये लोग फटके खेल रहे। भाई नाइस स्ट्राइक नहीं प्रीमियर में थोड़ी बॉट मिलेगा। मेरे पास गन आ गई अपने आप। यो दिस गाय हैज क्रेजी स्किन। हाँ पॉइंट है। तो मैं सेकंड मिड जा रहा हूँ। अरे ने ऐसे मेरे को क्यों गन खरीद के दिया? आई हैव लाइक 13,000 ऑन मी। आई मीन सबके पास पैसे थे ना, उसने ऐसे ही ड्रॉप कर दिए। नहीं क्योंकि अगर हार गए तो वैसे लास्ट राउंड क्या करेगा? वन बॉलर भी आई गेस 2 बॉलर टोटल बना। नाइस अरे यार मैं ना ऊपर बैठा हूँ। वन साइड दो है, एक पिट के पास है और एक साइड पे भी कहीं पे है। श्योर वो आई थिंक पिट वाला मूव कर गया। अ गाय आयुष्मान। ओए बे क्या मार दिया उसने मेरे को। चलते चलते मार दिया ना। खत्म हो गया। जी जी मैं भी बंदी कर देती हूँ। डैम इतना जल्दी। What to do then? व्हाट दिया? किरो का भी सर दर्द हो रहा है। No, I'll leave now अभी। मेरा CS बंद करते ही सर्वर को क्या? काउंटर स्ट्राइक के लिए तो सर दर्द कर देता है। तो तू कल से नहीं खेलेगा अब? नहीं थोड़ी देर तक ही चलता है बस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आई थिंक मैं सोलो क्यों चालू करने वाली हूँ एटलीस्ट कॉम्पी में। हाहा और लियो क्यों में भी ओरायन खेलेगा शायद थोड़ा बहुत। एनीवे चलो I'm gonna go now guys. I will see you tomorrow. हाँ मैं जा रही हूँ अभी। Bye bye. See you guys tomorrow. Good night. Take care. Bye bye.